Keep your weapon at the ready. You never know what's around the corner. हेलो तरुण भाई, फोन क्यों नहीं उठा रहा? कब से कर रहा हूँ। आजा। Can't catch me. सो गया था। चल कोई ना, आजा, बॉस मारना है फिर से। For justice. Fire hazard. Teamwork is dreamwork. Let me weave you a verse. Rain outlines your... Time for a light show! हेलो शुभम भाई। This is great. I feel so relaxed all over. I could almost... Stand back!
यार टाइमिंग पे गायब हुआ। Rain cutter. क्या दूर दूर दे रहा है। Teamwork is dreamwork. Yeah. Time for a light show. Can't catch me. Off we go. And then I'm going in. Fire hazard. Witness the power of Gugwa. Time for a light show. The sky is clear and the sun is shining. Time to get the Oni Kabuto out for some training. Come on, little guy, let's go. वाह, काफी नजदीक है ये आजकल के ना भाई। Can't get. और किधर है रे भाई? दिख रहा है क्या? Can't catch me.
क्यों साले तुम लोग कौन कर रहे हो? आजा चाट आजा। बे तू और कौन चाट बोलो तो भी बोलो ना। Can't catch me. जल्दी आजा। Osmanthus wine to... Yeah. Let's light it up! Teamwork is streamwork! Why do they never miss? Solidify. Can't catch me. Shudder! Let's light it up! Eye for an eye! Off we go! Stabilize. Off we go! Attaboy! Yeah! Crumble! Quake! Let's roll! This is order.
दो ही मिला था, एक और चाहिए। ये क्या है बे? Good things come to those who don't. Off we go. Adventure time. Off we go. Adventure time. Off we go. Adventure time. Off we go. Showtime! बिना अपग्रेड किए देखना। Rack and ruin. Stabilize! Shudder. Can't catch me! Beg for mercy. Teamwork is dreamwork. Come at me! I miscalculated. Attaboy! Solidify! Shudder. Crush. Alright, new toys for the boys. Alright, new toys for the boys. शुभम भाई क्या शॉर्ट आउट दूं? हाय तब भी तो दे दिया। मैं इसके साथ उड़ूंगा। Adventure time. तुमको तो बॉट देगा शॉर्ट आउट। Off we go. बॉट शॉर्ट आउट दे दे तुम्हारा दुश्मन। Off we go.
light it up. Adventure time. Let's roll! Ha! Solidify! I will have order! Bam! Adventure for mercy. Everybody stand back. Let's light it up. Crush. I condemn you. Let's light it up. I'm going in. Let's light it up. Beg for mercy. बोला मैं तुमको तो शॉर्ट आउट यही दे सकता. Feel the power, baby! Want to see me smash? Oh, ow! Where did that come from? बस हो गया तरुण उसको मारना. हाँ भाई ईटो निकाल लिया मैं. इसकी स्वॉर्ड अपग्रेड करना है अभी. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? रेडन भी निकालेंगे भाई. रेडन भी निकालेंगे. Arataki numero uno ito here in the flesh. पावर गया कोई बात नहीं. आज अपन स्टोरी करेंगे ना. Best flavor in the world? The sweet, sweet taste of victory. And that's why I've never spent a single more on any of my snacks. I've won them all, fair and square. That's right. लेवल 80 कर लो. हाँ अभी अपने पास वो नहीं है ना.
चलो जब तक रिमोट जमा करेंगे। पहला मेरे को बता स्टोरी किसकी ढंग की है, इसकी है इसकी है? पकाऊ नहीं रहना चाहिए, फाइटिंग वाइटिंग रहना चाहिए। तो बोल के भाग जाता है, बाद में पकते रहता हूँ। Don't underestimate the beetle. They can be some of the toughest little guys around. Yes, you can. Yes, you can. Want to know what's on this beetle's diet? Sweat and tears, that's what. That's how it gets stronger. I think we can all learn something from that. ये दोनों तो किया। जापानीज में लगाना, ठीक है। चलो लैंग्वेज चेंज करते हैं, जापानीज में लगाएंगे। कौन है भैया? और कौन कलेक्टर? अरे वॉइस कर रहा हूँ भाई। ए क्या किया ये, मैं क्या किया? ये क्या हो गया भाई? हाँ बस कौन है भाई? अर्पण कलेक्टर में नहीं है ना, जाने दे। बे स्टोरी आ क्यों नहीं रही है? अरे नेट सही था, वो उसमें इशू था। स्टोरी क्यों नहीं आ रही यार? क्या जादू है भाई, स्टोरी क्यों नहीं आ रही है? मजाक बना डाला भाई। स्टोरी का है ना आवत है भैया? अरे ससुरा, मैं बार बार भूल जाता हूँ बे। टाट डायरेक्ट छोड़ के जाता ना, बोलता नहीं कि तुम लीव करो। सॉरी सॉरी सॉरी। Can't catch me. Add Astro. Thank you for. Add Astro. Can't catch me. We haven't been to the YI Publishing House in a while. Paimon wonders if they have any new books in. The one we read with A that time was pretty cool. Come on, this is a no-brainer, man. There's only one thing worth wishing. But the exams. कुछ भूल गया, कुछ भूल गया। जापानीज करना भूल गया एक मिनट। I'm better off wishing that my exam goes smoothly. It's just an exam. Trust me, there's no problem you can't solve by throwing more at it.
If it रुको अभी जो doesn't अपने work, से होगा then just keep throwing till it does. What are they arguing about? It's quite a spirited debate. Huh? Really? You guys don't know? You need but stand on this अरे land जापानीज and करना भूल गया रुको ना lower अभी your कर रहा head हूँ and recite Looks like you guys really aren't in the loop. This, my friends, is the next big thing. A highly effective wish ritual guaranteed to make your wishes come true. A wish ritual? That actually works, right? Even Paimon knows that's just not how the world works. I didn't believe it at first either, but that changed when it worked for someone I know. It's this guy called Kunihiko. He's practically always been unemployed, wastes his days away, and he owes a lot of money. Like a lot. But get this. I अरे haven't seen कर him रहा हूँ for a few सुबह मैं days, रुको and कर रहा हूँ suddenly I find him dressed ये to the हटने दो फटाक nines से चेंज and कर दूँ feasting at a high-class restaurant. I heard it directly from him. He used this wishing ritual, and the next day he woke up to find his whole bed filled high with Mora. His whole bed was filled with... Wow! Of course, I'm sure the part about waking up lying on a bed of Mora is a bit of an exaggeration. Whether you believe it or not, it's not exactly a difficult ritual. It can't hurt to give it a try, right? If you're still feeling skeptical, just ask around. There are a lot of very compelling stories going around these days. Really? Well, come on! Let's go ask around right now, shall we? Well, if it really is true, then just think of all the Mora Paimon could... Oh, and you'd finally be reunited with your twin too! Let's go, let's go! अभी से बता दोこうして見ると本当にこのおまじないについて話してる人がたくさんいるな。あれ、あの二人って確か八重堂の編集と作家じゃないか？輝きたまい授けたまえ我のなんだっけ我の願いを聞きたまえ違う違う我の願いを聞きたまえじゃなくて我が願いに応えたまえだ。ああもういつになったら覚えるんだ。お前ら何やってるんだ？うわびっくりした。ああもうまた呪文が飛んじゃったよ。呪文？もしかしてお前らも最近流行ってるおまじないを試してるのか？正確に言うと試してるのは純吉だけだ。ここ最近純吉は創作活動、もちろん僕は信じてないが純吉は昔から人の話を聞かなくてね。だから僕も仕方なく付き合ってるってわけ。しげるさん頼むからもう少し協力的になってくれ。僕にとっては一大事なんだから。綺麗になりたい人、お金持ちになりたい人、学業でいい成績を収めたい人、このおまじないでいろんな人が自分の願いを叶えてる。この哀れな作家の僕が創作に行き詰まった状況をどうにかしようとするのもなんらおかしくはないだろう。それに今回はきっとうまくいくと僕の直感がそう言ってるんだ。でもこの間も鳴神大社へおみくじを引きに行った時、新たな発想がすぐにでも舞い降りてきそうだ、僕の直感がそう告げているとか同じようなこと言ってたけど。神社のご利益は現れるまでに時間がかかるんだよ。そんなこと今はどうでもいいから呪文を覚えるのを手伝ってくれ。次の新作はこのおまじないにかかってるんだ。正直今の君に必要なのは一度冷静になって自分が何を書きたいのか考え直すことだと思うよ。作家になりたての頃は
今よりもずっと高い क्या 志 बे を持っ स्टोरी てい सुन た के は भाग ずだ गए सब それが今やどうだ。出どころ不明の娯楽小説に書いてあったおまじないを信じるなんて。そのおまじないって娯楽小説に書いてあったものなのか？なあ、神聖探霊 सब 筆 तो 記って चलेगा いう कोई नहीं 娯 दिख 楽 रहा 小 बाबा 説に載ってたんだよ。いや、この本は自費出版されたものだ。いきなり現れたかと思うと、今や稲妻に旋風を巻き起こしてる。同じ作家として物語自体の評価には触れないけど、その中に書いてあったおまじないは本物だと誰もが言ってるんだ。純吉、確かにみんなこのおまじないには効果があると言ってるが、僕は他にもいろんな噂を聞いたぞ。この方法で願い事を叶えた人は निको का 言語が आवाज おか सुन しくなると के かなんとか。 बाद में चेंज कर そ दो んなの ओके きっ ठीक है と भाई あまりの出来事に आया 感 10 極まって मिनट 発狂しただけだろ。 खाना खाता ठीक है चलेगा 話を聞いた感じ、なんだか怪しいな。鳴神大社に行ってミコにこのことを聞いてみないか？娯楽小説や怪談話ならきっとミコの方が詳しいだろうし。 ओकेおや、わっぱではないか。ちょうど良いところに来た。わらわのところに面白い小説があってな。何時らも読んでみぬか？ अबे इसका साउंड किंग ऑफ फाइटर में भी एक जन है प्लेयर उसके ऐसा सेम इसका ほう、わらわに聞きたいことか。なんじゃ？実はさっきってあれ、ミコ今忙しいのか？別に大したことではない。八重宮司様、大したことないだなんて。お願いします。どうか私の兄をお助けください。まあ、本 ये सेम आवाज ना भाई किंग ऑफ फाइटर में प्लेयर है उसका भी सेम यही वॉइस है というのなら、こやつにもう一度説明させよう。お二方は宮司様と交友のある方とお見受けします。どうか宮司様に私の兄を救っていただくよう説得していただけないでしょうか。申し遅れました。私は加藤陽平というものです。私の兄慎吾は剣術家を志しており、かつては明鏡止水流の師範である土門さんの弟子として従事していたこともあります。しかし剣の道には向いていないと土門さんに言われ、兄は見向きもされませんでした。そのことがよほど悔しかったのでしょう。それからというもの、兄は鍛錬を重ね、つい先日土門の愛弟子との試合に勝利して自身の腕を証明したのです。ただそれ以降、兄はまるで人が変わったかのように様子がおかしくなりました。医者にも見てもらいましたが原因は分からず、まさか邪気に取りつかれたのではないかと思い、宮司様に相談しに来たのです。邪気などそうめったにあるものではない。汝の兄はかねてより抱いていた目的を果たしたことで心が空っぽになったのじゃろう。それも人の差がというものじゃ。わらわの見立てではそのまま何日か放っておけば勝手に治るはずじゃ。いえ宮司様、それは違います。その目で直接見ていただければきっとわかるはずです。 यूट्यूब पर ग्लिच है कि सब में सही में सब 絶 चलेगा 対に目的を果たしたからとか、 तरुण そ तो んな गया 理由 पता でな है るよう बाकी な状 सुबह 態 में ではないと。はあ、わかったわかった。では聞くが、汝の兄はいつ土門の弟子と勝負したんじゃ？確か5日ほど前です。5日前か。ですので兄がおかしくなってからもうだいぶ日が経っています。
私は心配で心配で。私と兄の最大の願いはいつか土門さんのような立派な流派を作ることです。私たちの夢がこのような形で崩れ去ってしまうなどとても耐えられません。まあ待て、汝は兄を助けたいのか、それとも夢を叶えて流派を作りたいのか、どっちなんじゃ？それは सुबह में बाकी 同 गए じことでは。最近何かおかしな噂を聞いたことはないか？もし心当たりがあったらわらわに話してみよう。噂を聞いていません。そうか、それは残念じゃな。宮司様、話をすり替えようとするのはおやめください。兄の命に関わることなんです。どうかお力添えを。ミコ、この人声が震えてるし、お兄さんの方も深刻そうだぞ。手伝ってやれよ。はあ、そうじゃな。ならばこうしよう。ミコ、手伝ってやるんだな。その加藤なんとか兵とやら、実はこの二人の客人はわらわと旧知の中でな、こういったことを解決する専門家なんじゃ。邪を払うなどお手の物じゃぞ。本当ですか？なんじゃその疑うような言い方は。助けを求められたからふさわしい人物を紹介してやったというのに、よもや信用できぬとでも言うのか？いえ、信じます。宮司様がそうおっしゃるのでしたらもちろん信じますとも。お二方とも感謝いたします。私についてきてください。おい、何考えてんだよ、ミ इन コ。 लोगों को कान धंधे पे 邪 लगा を दी 払うなんてことをオイラたちにできるわけないだろ。問題はない。邪を払うなぞ。塩を一つまみしてから適当に何か唱え、それを一息にまけばいいだけじゃ。娯楽小説でもよくあるじゃろ。大事なのは勢いじゃと。物語の主人公がそう言えば大抵の問題は解決する。じゃがあの者のことを心配しておるのは何時らじゃろう。それをわらわに押し付けようとするのはいかがなものかの。それに何らが鳴神大社を訪れたのはわらわに聞きたいことがあったからだったはず。多少はわらわのために誠意を見せてくれてもよいのではないか？なんだか釈然としないけど、妙に説得力があるな。さあさあ、早く行くんじゃ。それに心配はいらぬ。わらわもついて行ってやろう。わかった。じゃあ傭兵のお兄さんのところに行ってみよう。一体どうしたんだろうな。धक्का दे धक्का दे धक्का दे धक्का दे धक्का दे 追いつけまい。これはどういうことでしょう。兄は数日前からこの辺りでよく瞑想するようになったのですが、今日は姿が見当たりません。 इंग्लिश कर दो भाग गई सारी पढ़ने का はい。土門の弟子に勝った後、いきなりそのような日課ができたのです。よく一人でここに座り、独り言をつぶやいていました。正直言うと、その姿がかなり不気味で、今はそんなことを言っている場合ではありませんでした。あのような状態だというのに、兄は一体どこへ。ふむ、それは確かに問題じゃな。もし汝の兄が見つからなければ邪を払うこともできぬ。加藤なんとか兵よ、こうなっては仕方あるまい。まずは汝の兄を見つけてくるのじゃ。ついでに邪気払いに使用する塩も用意してくれ。わかりました。すぐに行ってまいります。ミコ、オイラたちはどうすればいいんだ。人探しを手伝わなくていいのか？
構わぬ。この時間を利用して、 Hello 共に Turbo 辺りを Gaming भाई 散 welcome 策 to してみる stream のも良いじゃろう。あの兄弟のことを聞いてみたら、何か面白いことがわかるやもしれぬぞ。Can't catch me. Hello, sir. We'd like to ask you about the Kato brothers. Oh, are you debt collectors? Yohei said to tell you not to worry. He'll be able to pay you back as soon as he has enrolled a few disciples. अबे साले तेरे से कुछ और पूछ रहे तो कुछ और जवाब दे रहे No, we're not here for anything like that. But, it sounds like Yohei and Shingo have gotten themselves into a bit of a pickle. Well, yes, I don't think there's any disputing that. Those two don't have an ounce of dedication between them. They just hop between ideas and won't stick to anything. Huh? But Yohei said his brother has always wanted to become a sword master, and even asked Domon to be his sensei. That's true, yes. Shingo begged Domon to take him on, and eventually, he finally relented. But even after convincing a renowned sensei to give him a chance, he was the same as ever, bumming around in class instead of focusing on his training. In the end, Domon had had enough and kicked him out. But Shingo was resentful about it. He blamed Domon for not seeing his potential, and even declared that he would challenge a disciple of Domon to a duel. Wait, what? That's not what we heard. Oh, how interesting. We heard a slightly different version. My brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could and finally proved himself by defeating one of Domon's best disciples in a duel recently. Yohei said that? That Shingo trained hard. That's ridiculous. He just lay there cussing to high heaven all day every day. Some training regimen that is. Yohei did tell me about Shingo winning the fight, but I took it with a grain of salt. You can ask Kenji at the village entrance more about that. He always has reliable information. Can't catch me. Hey there, we've come to ask you about the Kato brothers. Oh, you mean Shingo and Yohei? AR 41 हो गया We heard मेरा that ओके Shingo भाई defeated an apprentice of Domon's. Spotify कर लो जल्दी जल्दी आर्टिफैक्ट Is that फाइल true? वो करेंगे Yes, it's true. Wait, so are you here because you heard they're starting their own school and you're looking to sign up? We're not स्टिल here डोंट to हैव sign up, आर्टिफैक्ट टू but we कैरेक्टर would बस like to know 4 रैंक more और कर लो details भाई about फिर the मिल fight. जाएगा Well, you've come to the right person. I actually went to watch it. I thought it was a joke when I first heard that Shingo was going to challenge a disciple of the Meikyo Shisui art. But when he drew his sword, he became a whole different person. The way he handled his blade, it was like flowing water, mesmerizing to watch. Domon's disciple is no pushover, but he was absolutely no match for Shingo. Is Shingo really that strong? Yep, he seemed pretty euphoric after winning the duel, too. He was celebrating very vocally, saying something like, "What a duel. I haven't felt this good in a long time." Any other details to share? We've heard that Shingo has been behaving rather out of character since then. मैं भी इस नहीं खेल सकता I'd definitely say that he तू has more पार्टी के energy लिए than he बोलता used to. हाँ भाई मैं भी इसलिए तो In the टीम बना past, रहा he हूँ never सेकंड used to पार्टी do के लिए much except lie around sunbathing all day. But just yesterday, for example, I saw him cutting down trees for the village head. In the space of one afternoon, he did what most people couldn't finish in 3 days. Not only that, but he managed to fell a lavender melon tree with just one kick. Quite impressive. Things got weird after that, though. The village head brought out some tofu for him,
and he just flipped out. He shouted, "What is that stuff? Keep that away from me!" and then ran off. Lady Guji, esteemed exorcists. Finally, I found you. I found my brother. He's at the waterfall, and I've got the salt you asked for too. Come on, let's go! Oh, as much as I'd prefer to stay and hear some more delicious details, I suppose we'd better be going now that he has been found. समझ में नहीं आ रहा किसको रखूं सेकंड पार्टी में। अरे कोई अपग्रेड होगा तो ना, मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ। Look over there. So this is Yohei's brother. Whoa. He's meditating while sitting in a waterfall. That's pretty wild. Hey, listen! He's talking to himself. मैं भी आता खाना खा के। अच्छा चलेगा भाई, कोई बात नहीं। जाओ खा के आओ जल्दी। आराम से आओ, मस्त कच्चे से खा के। फर्स्ट स्टार आर्टिफैक्ट के डोमेन में 80 लेवल के एनिमी आते हैं। हाँ भाई, मेरे में तो अब 90 आ रहे हैं। Can you feel the feeling of manliness? Found your own school? Ha! So shallow. How can a manly man aspire to something so lame? Please, spare me. Spare me. I can't feel the manliness. I can't even feel the cold anymore. I can't take any more. I'm gonna die. Yohei. Yohei! Save me! Save me! कहाँ रखी? Did you hear that? All the nonsense aside, he's going for help! Huh? Who goes there? He stood up! And now he's coming this way! यार बापू है। No, don't come any closer. Help! What do we do? Miko, think of something! Oh, poor thing. Yohei, your brother's life is hanging in the balance, and he's using his final breaths to call on you for help. Whatever shall we do? Well, how should I know? The way it looks to me is that Shingo feels terribly resentful to you about something. Would you mind telling me what that's all about? I don't know what to tell you. I don't know. You don't know? But surely you should have more insight than anyone else into how your brother came to be this way? Yohei, I suggest you think very carefully before you open your mouth again. This is a life or death situation. मैं बोल भी। Your brother is your closest relative. You must have noticed straight away when he started acting out of character. And yet, 5 मैं भी whole आता हूँ days कुछ passed खा before के। you अरे forced him भाई to come and seek help from me. चलो ठीक है, You तो लगाओ really खा के। expect me not to मैं जब notice तक the स्टोरी gaping क्रिएट कर holes in लेता your हूँ। story? इश्यू नहीं है। But I... As you wish. It's fine by me if you don't want to tell the truth. But after Shingo dies, you'll be next. It's futile trying to escape. Anywhere in the world you run to, it will be right behind your back. After all, you did summon it together. Ah! I All right, am I'll back. talk. I'll tell you Okay. everything. कोई तो आया। Yes, that's it. The one that's all the rage right now. You just have to recite an incantation at midnight and your wish will be granted.
Just like the book described, we drew the magic symbol, stepped inside it barefoot at midnight, said the incantation, and lo and behold, spheres of light appeared all around us. After my brother wished to become a swordmaster, it really worked. Out of nowhere, he suddenly had these amazing sword skills, but his whole personality changed too. Because I was worried that if he goes back to normal, he'll lose his skills with the sword. If that happens, it'd ruin our plans to start a martial arts school, and we'd be back to being poor. I just wanted to keep this under wraps until we'd managed to get the dojo set up and paid off our debts. So then, why'd you go to the Grand Narukami Shrine? Well, 'cause with the way he's acting now, I was worried that rumors might start spreading that he's gotten involved in the occult arts or something, and then no one would want to sign up as his disciple. So I was thinking that maybe Lady Guji might have a way to get my brother back to normal, but let him keep his sword skills? My, look at you with your ingenious schemes. Stop deluding yourself. These newfound sword skills are not his. They ईटों का belong लेवल to the कितना हुआ? spirit ईटों that का has लेवल possessed 70 him. हो गया. You're right, you're आर्टिफैक्ट right. लगाना है We उसका. were wrong to do what we did. We had this coming. All right then. Your turn now, my little friend. Toss the salt and then draw your sword. क्या किया भाई? What is that? Ah, it's the spirit! See that? That's what you summoned. And look, now that Shingo's no use, it's coming straight for you. Ah, save me! Save me! Miko! He fainted! What do we do now? We do nothing. But you, little one, just a quick fight and this will all be over. Who's this? Ah, a fellow swordmaster. Come on, fight me! He's coming! Be careful! मैं किधर हूँ? वो मर गया? Let me try. ईटो मर गया अपने से? Time for a light show! कैसा कैसा भगवता रे? Time to act. This will end you. Everybody stand back. Let's light it up. Ring cutter. I'm ready. That was great! Excellent! Woo! What a rush! I haven't felt this great in a long, long time. He disappeared! But he looked pretty content at the end there. Huh. Well, Paimon sure is confused. Do you know what that was all about? We can talk about it later. They're about to wake up. What am I doing here? Yohei? Yohei, is that you? Shingo, are you alright? Yohei, I had the weirdest dream. I dreamed that I wasn't a useless loser with a sword anymore. I even beat one of Domon's disciples. I thought we could finally open a dojo of our own now. But then I realized I couldn't control my own body. And there was this voice in my ear talking to me constantly. I was terrified and I wanted to take control of my body back, but I couldn't. And the voice kept talking about manliness. Shingo, we shouldn't have made that wish. We summoned a spirit and it possessed you. Yes,
And had we not come to your rescue, your life would have been over before too much longer. Then the spirit would have haunted your brother until he died of fatigue too. Thank you, Lady Guji, and thank you for your assistance, Welcome back, exorcism Subham. experts. खा लिया खाना? All right, take him to get some rest. He's very weak right now, having been possessed for quite a few days. He will experience a high fever, but it won't be fatal. Remember, this is the price you pay. At this point, I would normally lecture you on the dire consequences of using occult methods to obtain power that does not belong to you. But I think you get the picture now, खाते हुए देख don't रहा है, you? अच्छा भाई. Yes, we understand now. We won't do it ever again. Thank you, Lady Guji. Thank you, exorcists. We'll be on our way then. Come on, चिकन Shingo. बिरयानी, वाह भाई वाह. Miko, would they really have lost their lives if we hadn't gotten involved? And if so, why the heck were you so reluctant to help out? Oh, they would have been fine. I had to scare them a little, though. Otherwise, I hardly think these two lazy rascals would have learned their lesson. So, what was it that possessed Shingo? You saw it all for yourselves. I'm sure you can figure out what kind of spirit had possessed him, can't you? Paimon's got it. It was an Oni. Correct. Although it possessed Shingo, it didn't have any ill intentions. As a matter of fact, it actually seemed like it was trying to train Shingo to become bolder. Huh. Fair enough. But it seemed like it had the opposite effect. Tossing salt caused it to temporarily leave Shingo's body. Then, you exhausted its strength by fighting it, so it disappeared. Even if we'd done nothing at all, Shingo would have eventually become too weak for his body to host the spirit, and it would have left of its own accord. Of course, it would have been more stressful for Shingo and Yohei that way. Still, the experience may ultimately have been more effective than me scaring them into submission with a little exaggeration. Whew. Well, the main thing is that nobody got hurt. All right, seems like we've wrapped up everything here. Come on, off we go. Hold on, Miko. You say everything's wrapped up, but are you sure about that? You mean you disagree? Oh, you mean that they got the incantation from that book? Yes, I know the one. Actually, that book's the whole reason we came looking for you at the shrine today. Incantations seem really popular right now. Human beings don't have powers like us yokai. It's quite understandable for them to be interested in incantations to summon the supernatural. That's not the point. The problem is that the incantations in the book are actually capable of summoning spirits and stuff, and loads of people are trying it. Even then, humans only have so much strength. Even if they do successfully summon a spirit with the incantation, it won't stay with them for very long. I really wouldn't fret about it. But who wrote this book, and why? Don't we think there might be a bigger safety risk here? What do you think, Traveler? Yeah, Yohei and Shingo may have been fine in the end, but things got pretty scary when Shingo was possessed. Lady Yai, I finally found you. Kuroda, what are you doing here? I'm here to report on Yai Publishing House's sales for the last month. All the numbers are here. Please take a look. Let me see. What? We're losing market share? Yes,
overall bestseller, readers' favorite, and trending ranking. We're being beaten in all categories. One book is topping the charts. It's called A First-Hand Guide to Summoning Spirits. Both of you, back here now! Nico? What is it? You have a really scary look on your face right now. Things just got serious. A First-Hand Guide to Summoning Spirits is an all-round hit, summarily beating the novels of the Yai Publishing House by every analysis. Just what is that supposed to mean? I worked extremely hard to promote our latest featured work, and now a rival book comes out of nowhere and steals our thunder. अब ऐसा If मेरे this को ना isn't the धीरे very धीरे बोरिंग लग रही है definition of अभी. intolerable, I don't know what is. I have to come up with a counterplan, and you are going to help me. Huh? How is this our problem all of a sudden? Paimon, please. Who wrote this book and why? Don't we think there might be a bigger safety risk here? Oh, am I to take it that the safety of the people of Inazuma isn't so important in your eyes after all? Wait, what just happened? Again, you technically have a point, but this feels all wrong. Nothing's wrong, okay? Come on. We're going to war. I'm going to head back and make some preparations. Meet me outside the Yai Publishing House. Nico, we're here. So what's your plan of action to deal with this rival book? Why don't you take a guess? I'll give you a hint. It's to do with the Yai Publishing House. Oh, Paimon knows! Combine the reputation of the Yai Publishing House with the status of Guji Yai and tell everyone that the incantations in that book are dangerous! Oh, wow. Your first guess and you got it absolutely... wrong. Yeah! Wait! Seriously? That wasn't it? A First-Hand Guide to Summoning Spirits is the hottest light novel right now. If we did as you suggested, we would effectively be advertising to everyone that the incantations are real. In bending over backwards trying to warn everyone about the dangers, all we would accomplish is to create more curious readers ready to try them out. Also, sales for the book would only increase further. Okay, yeah, that would be pretty catastrophic. Oh, how about we confiscate all the copies? Leaving aside the issue of the enormous manpower and resources such an operation would require, going to such lengths over a light novel would be extremely disruptive to the lives of Inazumans. But that means there's nothing we can do. Well, I've been thinking. I've read A First-Hand Guide to Summoning Spirits. It has many other good qualities besides the incantations alone. The book contains many ancient kaidan, or tales of the supernatural, and is written in a very engaging way. That is why the book has become so popular. I think we're going to have a difficult time trying to rein in its That's right. How do you get rid of the next big thing? You replace it with the next big thing. So what we're going to do is create Inazuma's newest hit novel. Smash our rivals' sales numbers and win our readers back. That is how Yaimiko wages war. Incidentally, this will also be the best way to combat the influence of A First-Hand Guide to Summoning Spirits. Wait, Miko, so you want us to write a novel? Well, becoming an accomplished novelist certainly isn't an overnight process.
But let's not forget that I am the chief editor of the Yai Publishing House. I have my ways. I did say this is what we're going to do. I trust that the word teamwork is in your vocabulary. Anyway, there is a writer submission event going on at the moment. Start by talking to readers and finding out what they're into. When you have an idea of what the current trends are, come back and see me. I'll be at Uyu Restaurant. Find me there when you're done. I will assemble a team, and we can work while we eat. The key to a successful light novel is having good illustrations. When to use illustrations, what they should contain, and which artist you should commission for them. These are all key things to bear in mind. Good illustrations can make up for bad writing. But on the flip side, a bad illustration can ruin your novel, even if you have the best story in the world. There's a saying that light novels are essentially a case of buy art, get words free. यो टर्बो गेमिंग भाई बस अभी खत्म होने ही वाला है यार Most of स्टोरी the top artists have jam-packed schedules, so it's extremely difficult to commission them. The illustrations in Turbo the first-hand Gaster guide to में था summoning spirits are incredible, but it's unlike any art style I've ever seen before. I've been reading light novels for a long time now. I mean, these days, though, everyone seems to be imitating each other. The only recent... Not only is it a good... The Yai Publishing House has held. The winner gets a huge amount. I'll be honest. I read light novels for the cheap thrills. In most traditional stories, the protagonist usually has this long and drawn-out character arc, usually involving a process of separation, loss, and ultimately growth and renewed strength. By contrast, there's this popular light novel at the moment called A First-Hand Guide to Summoning Spirits, where the protagonist is super strong मैं सही right गेस from किया the था get-go. वेलकिन मैं करता ना That's गेस what I mean by cheap thrills. The protagonist is a kitsune who has not only mastered the secret art of incantations, but also tea ceremony, painting, and शुभम भाई हमको भी तो ऑफर यार गेस करने का There's much more to light novels than Paimon realized. ऊपर चल भाई गोभी की भाजी खा रहा है रोटी खा रहा है मैं सही बोल रहा हूँ ये गोभी की भाजी और रोटी खा रहा है वही तो बोल रहा है हमको भी दो ऑफर Let me introduce the team. You've already met Junkichi and Shigeru. Shigeru is an experienced editor, and Junkichi is the author he's partnered with. Junkichi's working through a creative lull at the moment, but all his past works have been very popular with young people. He's developed a distinct and enduringly popular style. Satomi is Yai Publishing House's ace in the hole. Her specialty is that she can write all kinds of completely different stories and all under different pen names. As for what those names are, well, that's a trade secret. They will be teaming up with us to collectively create the novel that knocks A First-Hand Guide to Summoning Spirits off its perch. So, feeling better about my plan now? Uh-huh. It definitely makes sense. Now then, tell me what you found out about readers' preferences. All very true. An original core concept, a fast pace, quality illustrations, and lots of action. This is the formula that will guarantee good sales numbers. More importantly than that, even though it's a work of fiction, we have to deliver a sense of realism. Paimon followed pretty much all of that, but there's still one question. What are we actually gonna write about? Chili rice. For example, we know we need an original core concept, but how do we come up
गैस करो भाई, गैस करो, टर्बो भाई, वाल्किन मिल जाएगा. Before you can answer that question, you have to understand your target audience. Take a first-hand guide to summoning spirits, for example. When I read it, all I find is common knowledge to the kitsune. But to the general public, it's bursting with new and interesting ideas. It all comes down to the size of the information gap between author and reader. As a traveler, there must be a great many things you know that are complete unknowns to the people of Inazuma. What is commonplace to you may be fresh and original to them. Oh, right! So maybe we can take but that would make it a completely different genre than a first-hand guide to summoning spirits. Is that gonna be a problem? Not at all. You don't have to worry so much about how to compete with that book. All you have to do is provide some interesting ideas based on your travel experiences. As long as the core content is interesting, my expert team here will be able to flesh out the details. Alright, let's start with Chapter 1 then. What are you thinking? Let's see what you got. After enrolling in the Mondstadt Academy, I found out that the young man sitting next to me in class was a total slacker. He said he was a bard, had a habit of playing his lyre in class, and always had a bottle of liquor on his person. But his true identity was actually the principal of the academy? What kind of plot is that? Out of a maximum of 10 points, I'd give that a 9.5. It just goes to show, you have to have an interesting character sitting in the back row by the window. The protagonist is a transfer student, new to the school, whose ordinary life is about to take a wild turn when they meet the ballad and alcohol-loving principal. मिक्स वेज और Sounds रोटी भाई, interesting. बहुत जबरदस्त आंसर दिया है. Paimon just does not see the appeal. Good job, little one. You're not only drawing on your own experiences, but it seems you're filtering them through the lens of the kinds of light novels you've read in the past. I think you really understand what we're trying to do here. Thoughts from the experts? Are we able to work with this general framework to make an interesting story? Yeah, we think it works. I tend to overcomplicate the core concept if I'm not careful, so this deals with that problem. That's good. Okay, we're done with Chapter 1. Let's move on to Chapter 2. Won't that do for now? Readers will devour your content a lot more quickly than you'd think. If we don't keep delivering the goods now we've caught their attention, all our hard work so far is in vain. Hurry, Chapter 2, let's go. Can't you see that Satomi is waiting? What's wrong with you? You don't look so good. What a pity. I thought your beginner's luck would carry you a little further before it came to this. But alas, the time has come prematurely. कितना बड़ा है वो स्टोरी, बस पकाई जा रही है भी, फिर तो अब पकड़ो ये The स्टोरी से. bane of our existence. Writer's block. It's your arch nemesis for life, appearing without warning अरे and आलू inflicting पागल a है, क्रोंडी pain बोल worse दो. than death upon the writer. They sell their souls just to get their muse back. Sounds awful! When this happens, the best thing you can do is have a bite to eat and take a proper break. Boss, get me a plate of fried tofu, and get some kushikatsu for these two. Just the basic kind will do. Don't worry, this is my treat. Your treat? Oh, wait a गाय minute. टर्बो लगा हुआ है. We'll be getting paid for वाल्किन all तो the hard लेकर work रहेगा we're भाई, doing, जितना right? जवाब दिया उतने में. Of course, वाल्किन दे everyone दो यार who takes इसको. part in... Alright, cool. Then let's press on, shall we? Don't give up now, for the sake of our... Ooh! Does this mean your inspirations? चलो The यार, Lily बहुत पकड़ा. Academy has more student clubs than you can shake a stick at. And as the new kid on the block, the protagonist is the one they're all fighting over.
There's the Culinary Club, the Architecture Club, the Funerary Club, even the Coconut Milk Research Club. But in the end, the protagonist chose to join the Rock and Roll Club. Taking a chance on their youthful dreams, 4 newcomers to the Academy form a rock and roll band that really begins to take off. Paimon loves it! I give it a 9.5. A classic tale of youth and friendship. It never gets old. I especially like the head of the club. Great character design. She really has rock and roll coursing through her veins. I can almost feel the heat from that fire in her soul. Approved. Aw, yeah! Great. Well, now Satomi can get started on that. Leave it to me, Lady Yai. Let's write about Inazuma in the 3rd chapter, shall we? I can help with this one. We can use the Vision Hunt decree or your experience in the Resistance. Any ideas? The strict Principal Raiden of the Inazuma Academy decided to confiscate all light novels. With the help of Lady Kitsune, the protagonist defeats Principal Raiden in an exam before the throne, forcing the principal to abolish the literature अबे hunt पालक आलू बोल रहे हैं. Are we absolutely sure we can publish this? We can and we will. I think it's great. One thing, though. We'll need to rewrite the part about me giving you the omamori. Let's change it to... The mysterious Lady Kitsune teaches the protagonist a spell that can make their wishes come true. The protagonist uses this spell to defeat the Raiden Shogun in battle. That should do the trick. पनीर कोफ्ता. So we're really going head-to-head with our rival on this one, huh? I suppose so. Once they're done writing the manuscript, I'll write... Are we done then? Do you really think this will be able to beat a first-hand guide to summoning spirits? The content is fine. Now we just need to promote it. I will contact an artist to make some illustrations. I'm positive they will be at least as good as those in A First-Hand Guide to Summoning Spirits. We'll also need an endorsement on a paper band around the book. I can get the wonderful Ms. Hina to write that. She runs a regular Q&A column in That's Life magazine. The people of Inazuma absolutely adore her. You're free to take a break while the creative team is doing their work, but please go by the Yai Publishing House at some point to commission Ms. Hina for that recommendation. Once our light novel is complete, let's meet at the writer's submission चलो गैस event. करो. मैंने क्या कहा होगा शुभम भाई? मैं देता हूँ फिर. वेल्किन मैं दूंगा जो गैस करेगा. पूरा नाम है. 2 डिश है साथ में. नहीं पनीर कोफ्ता होता है ना. Miss Hina doesn't usually do endorsements, but since it's Lady Gucci that's asking, we'll see what we can do. With Miss Hina getting so popular lately, a lot of people have come to us hoping to do a collaboration. But Miss Hina's not interested in any of it. She still prefers to focus all her efforts on replying to readers' letters, and turns down every promotional opportunity she can. Maybe that's why her fans like her so much. I'm getting off topic here. Anyway, if we can get that endorsement from Miss Hina, you'll definitely get an exposure boost at the beginning. May your light novel sell well and set a new record for the Yai Publishing House. We'll do our best. अबे क्या दौड़ा रहे इधर से उधर इधर से उधर. Are you sure you'd like to submit this entry? Let me see. The Miraculous Adventures of the Traveler by Thousand Hands. What a strange pen name. Definitely your doing. Having been around you so much recently, Paimon slowly
starting to understand your unique tastes. What do you mean, strange? It took a lot of work by a lot of different people to get this thing finished. Don't you think it's a very descriptive pen name? We'll get this printed as a matter of priority and conduct trial sales in pilot locations throughout Inazuma. I'll announce the sales numbers in 3 days. Uh-oh. Paimon's getting a little nervous now. Do you really think this is gonna work? That's right. Be confident in your work. That's exactly how a light novelist should be. Okay, then I'll sign you up. Please come back in 3 days for the results. Thank you all for your submission. I wish you the very best of luck. तीन दिन वेट करो, 4 दिन वेट करो, ये वेट करने का भाई 1 दिन 2 दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं होता। हमारे यहाँ कभी कभी बनता है तंदूरी रोटी। वाह, पाया रोटी ना भाई, मैं बोल रहा ना, वेज और नॉन वेज दोनों है। चिकन बिरयानी, मिर्ची का साग। You've all finally made it. Good news, everyone. I just received word that your light novel is flying off the shelves. Multiple sales locations are asking when we'll be printing more copies. Woohoo! That's great! This level of success is an amazing accomplishment for a new work. चिकन में भी Most है। new books don't sell 30% of what you've sold. I have free copies for each of you here. Please take them. The payment will follow shortly, and I'll notify you to come and collect it when the time comes. Oh yeah! The whole reason why we made this light novel was to combat the influence of a first-hand guide to summoning spirits. We sold a lot of copies, but it doesn't feel like we accomplished our goal. How do we know whether it worked? Nah, wrong है। Oh, don't worry. The change is already underway. Shh. Listen to what the people around us are talking about. The conversation has already moved on, hasn't it? Hey guys, have you heard about this latest Kaidan thing doing the rounds? You just need to recite the incantation from A First-Hand Guide to Summoning Spirits at midnight, and your wish will come true! Oh, that? That's a throwback. That's old news, man. No one's talking about that anymore. The Secret Spells of Lady Kitsune is the new hit thing. I've already memorized all the incantations. The Secret Spells of Lady Kitsune? What's that? You haven't read it yet? Okay, so supposedly, if you recite the spell in there By on Moonless touching Night, grass. you'll receive protection of the Kitsune and all Yes, the sir, other Babu powerful Yagi. yokai. They can make any of your wishes come true. Yes करो, I heard yes that the करो, very incantations in good। A First-Hand Guide to Summoning Spirits have weird side effects. This one guy wished for a load of Mora and got it, but then one night it all turned to leaves and he developed a high fever. They actually had to use one of the secret spells of Lady Kitsune to get rid of the discomfort. That proves that the incantations in this book are more potent than the ones everyone was trying before. Really? Well, I better go and prepare too. दोनों है। Well, feeling less worried now? Wow! You're right! Everyone's shifting focus! But what's this moonless night that they're talking about? Jaime doesn't remember that detail from the brainstorming session. This is something that will become very important to us further down चिकन the के साथ line. ऐसी चीज है जो वेज वेजिटेरियन भी It's खाता है। time to move on to the next phase of the plan. There's a phase 2? Of course. Behind every book that hits the market lies an author, right?
Oh yeah, if we leave him to his own devices, he might just write कीमा another पाव guide to अरे summon spirits. चिकन की बात करी कीमा कहाँ से आ We गया need to figure out what his motive for writing it was. Exactly. That's what we need to take care of next. Fortunately, I've already managed to identify the author. He's a failed light novelist named Tomoyuki. But when we went to ask him about it, he had no recollection whatsoever of having written the book. बोथ है बोथ हार गए लास्ट चांस है सबको Yes, this is another case of possession. Only this time, whoever possessed him actively sought him out. After his novel submission failed, he was walking aimlessly in Araumi. In frustration, he shouted out, "Please, someone, anyone, help me write a truly amazing novel." करीब करीब After that, he lost consciousness. But the spirit that wrote the book has already left him now, right? So what are we supposed to do? Simple. It wrote a summoning incantation in the book, didn't it? So we can just use its own method to make it manifest itself. And you, my little friend, are the perfect candidate for this role. चलो सब लोग लास्ट What बार are you जवाब दो उसके talking बाद मैं about? बताता हूँ The fun's just about to begin. भाई टर्बो गेमिंग का तो पूरा उस पे ही अटका हुआ आलू मेथी Miko, what is this place? The ideal spot for a little meet and greet with a certain elusive author. This is the place where we are most likely to succeed in summoning the spirit. Really? But it feels so eerie here. That seems rather fitting, considering that we are dealing with the spirits of the deceased here. What are you so afraid of, honestly? We're finally about to meet the true author of a first-hand guide to summoning spirits. Paimon's heart is pounding, but Paimon's pretty sure it's not because of excitement. Hey, wait up! Oh, Paimon's scared. Stay close by, okay? Don't leave Paimon all alone. नहीं चलो टर्बो गेमिंग भाई बाहर हो गए Ready for anything. जाने तो बता दो भैया भाई चिकन टिक्का एंड मिक्स वेज विथ पाव बहुत करीब करीब थे भाई कौन सी गलियों में घूम रहे हैं हम What a weird painting. Miko, do you know what it's supposed to show? Probably a scene हाँ from वो बोला ना ancient करीब करीब हो Inazuma. It's a good piece of artwork and all, but it's also kinda eerie. So it's a bit scary. Looks like the artist signed their name. Rakusai? It's not very clear. Let's go inside and take a look. चलो भाई इनसाइड It's my lucky day. Right now, emerge. Adventure time! Off we go! Adventure Rain outlines your fate! क्या ब्लॉक कर रहा रे किधर गया जो ब्लॉक नहीं कर उसको मारो Right now. Right here. Right now. Ignore my sword! I'm going in!
I'm ready. Cut down. Wow, this place is huge! Hey, is that a mirror? There's a really weird-looking stool as well. Wonder what it's for. Ah, I see. Huh. This setup is quite handy. Saves me a lot of work. All right, go and take a look around. There should be a mechanism somewhere that makes the whole room move. इसका बटन कहाँ पर है रे? ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर नहीं चढ़ेगी। इधर है। अबे मैं भी नीचे गया। Emerge right now. Dodge this. Fire hazard! इधर गया भाई। मरेगा सर। बटन 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 बटन। इधर है बटन बटन बटन। Emerge right now. Emerge. Let me weave you a verse. Ready. Time for a light show! भागने दो हराम करो। I swear by my sword. जान फटी। Everybody stand back. Right now. Right here. Right now. A sight to behold. इसका ट्रिगर कहाँ है? इसका ट्रिगर है। अबे बे। वापस उठा। बहुत घाई रहती है मेरे को, बहुत घाई रहती है। फंस गया मैं तो, फंस गया मैं तो। फंस गया मैं तो। नहीं फंसा। Let's get down to business. Right here. Right now. Emerge. Rain outlines your fate. Fuse is lit! Right here. To the berry. एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया। चौथा कहाँ से आएगा नहीं? Daddy, चाय पत्ता। इससे ऊपर उड़ता नहीं। Right now. Emerge. Right here. Why did it matter? Go in! Witness the power of Go Wild. Fire hazard! बच्ची को कुछ चाहिए। जाते घूम फिर के तो वहीं आ गया था। किधर था वो उठाने वाला?
टूटता भी नहीं, टूट गया। Adventure time. लैम्डा दे इधर इधर बच्ची कुछ नहीं बोल रही है, बच्ची तो बोलती है उसको चीज चाहिए, दिलाने ले जाना। It's getting eerier and scarier. What is this place? Okay, next I will show you a secret kitsune spell. This painting is a swift summoning medium, which means I'll be able to skip many of the more tedious steps. The murky mirror reflects the viewer in a bygone age. Spirits stirred by the sight of the past will be easily drawn to it. You're up next, little one. Come on, sit yourself down here. Yes. The whole point of a summoning ritual is for a dead person's spirit to possess a living person's body. You saw what happened to that Oni samurai spirit. After leaving the host's body, he was only able to guys, जितने भी maintain his नए हो form like for and a very subscribe करो short यार। time before disappearing. Are we positive that summoning a spirit to possess the traveler isn't gonna have any lasting negative consequences? Oh, you really care about the little one quite a lot, don't you? I'm a little jealous. चलो अपन वैसे करेंगे, दिन में वेलो या फिर जीटीए अगर सही होगा तो जीटीए अगर सही हुआ तो उसको कोशिश कर रहा सही करने का, तो मदरबोर्ड ही Don't you चेंज worry now. It'll be over soon. Just think of it like having a dream. Sit on the chair, stare at the painting, and relax your body and mind. Try and be natural. There's really no need to be nervous. It's like he's sitting inside the painting. Huh? Is Paimon seeing things? Did the painting just move? Recite the incantation in your heart, little one. Also, you'll need to have some intense thoughts going through your head. A wish, for example. Now, what kind of wish do we think it would take to summon forth the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits? Anyone? Probably something to do with writing? Very good. The wish needs to be heartfelt, though, so let me help add a little realism to the equation. The book is selling exceptionally well, Traveler, but we're going to need an outline for Chapter 4 as soon as humanly possible. When is the earliest that you can turn it in by? The painting is moving again! What the? यार हो गया भाई, अपना ट्रैवलर हो गया। I never thought the day would come when I'd be summoned using my own ritual. Getting a taste of my own medicine. What have we here? Another budding writer? What's come over you all? Why is everyone wishing for help with their writing?
Are novels so popular in this day and age? We got you! So you are the one who wrote a first-hand guide to summoning spirits! ट्रैवलर को लेकर जाओ सही में। Why'd you put that summoning incantation in the book, huh? What's your game here? Huh? What's this? World War Z. Oh, I see. No wonder this felt so familiar. I've walked right into your trap, haven't I? You ask me what my game is here? Well, of course. It was to use this incantation as a means for all the souls of the departed yokai to make their glorious return to the world and plunge all of Inazuma into a brutal, bloody war. What? Paimon knew it! You had an evil plan all along! Oh, did you now? Then how naive of you to let me possess this body so easily. I sense, yes, great power within him. Good. Good! With this power, no one shall be able to stand in my way! Wake up! Quick! Wake up! We gotta stop him! It is futile. You shall never wake him again. This body now belongs to me. Hey! Come on, wake up! Don't let him take your mind! Miko, think of something! Miko! Miko! You're laughing? Oh, Rakusai, you haven't changed a bit. You caught on so quickly. Too perfect. Well, you made the face enough times that I couldn't exactly miss the hint. This is what you were going for, yes? Never one to stand on the sidelines of a good spectacle, are you? Always got to dive in and fan the flames, huh? You mischievous little kitsune, you. Look what you've done to this little flying one here. Oh, poor thing scared witless. You were having plenty of fun playing the bad guy a moment ago. Now you're trying to blame it all on me? Rakusai? Miko, you guys know each other? Yes, we do. Of course we do. Allow me to formally introduce the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits, Urakusai. No, wait. To be more accurate, it's Urakusai's memory. Memory? But isn't he a spirit? Ah, spirits, memories. They're just different words to describe the same thing. Something that comes from the ley lines. Do you remember that recent incident when the Rift Hounds were gnawing at the sacred Sakura's roots? You witnessed human memories leaking from the ley lines, didn't you? Well, since there are human memories, of course there are going to be yokai memories too. In life, yokai possess supernatural powers, and even when they are a shadow of their former selves from a bygone era, they still have the ability to control whether they are visible or not. Call of Duty Warzone बहुत बड़ा survive गेम है यार। longer in the world than those of humans. Indeed, indeed. बहुत ज़्यादा जीबी का है, 100 जीबी क्रॉस करते हैं। डाउनलोडिंग करना भारी I पड़ेगा। suddenly heard someone yelling, "Please, someone, anyone, help me write a truly amazing novel." It piqued my curiosity, so I popped inside his body and wrote a novel for him. So that's how it happened. But why did you include a summoning incantation in the novel? Oh, little one. Not to toot my own horn here, but when I was alive, I wasn't just another kitsune, no. I was a mighty and powerful Daioko. The memories of other yokai can't possess human bodies at will like I can. But with this incantation, they can go one last little joyride in the world for a couple of days. Anything they're still itching to do, they can go and get it done. But
ग्राफिक तो अच्छा है लेकिन गेम बहुत She's बड़ा है trying यार। to say that all the 100 commotion this GB के causes ऊपर is डाउनलोड likely करना to be a कितना दिन great लग जाएगा? disturbance to the humans. Disturbance? I guess you mean that we might leave them with some broken dreams after we leave, hmm? Oh, yes. But you चल know, I पकाओ मत actually पकाओ think मत that the चलो most बस admirable thing about human beings is the way that they... As for those who would rather draw on external power than seek to improve themselves, it's quite right that they learn their lesson eventually. So when you think about it, we're actually doing the humans a big ओके favor. भाई पे मारियो डाउनलोड Miko, कर you ले agree, don't you? भाई Yes, that's what I thought too. Alright then. You finally convinced Paimon. You guys were right. What are you scared of, little one? Don't be deceived by her day-to-day antics. Miko is actually one of the most powerful yokai out there. Not only that, Irakusai, but my latest work has beaten that book you wrote, A First-Hand Guide to Summoning Spirits, to become the most popular in Inazuma. Of course. You were never one to make extra work for yourself where you can मेरी help. वर्ड्स कर रहा है And yet साला you went क्या to सजेस्ट all कर रहे these हो? lengths to find my painting room, and even took the trouble to summon me. ऐसा कोई I सजेस्ट knew करता है? you must have some ulterior motive. You were always the one to pick a quarrel with me when we all used to gather around and share stories. All right, all right. Among You Us. win, Okay I है lose. मेरे पास Among Happy Us. now? I finally get to hear you say it centuries later. Ooh, I must say it feels good. I remember when you were just a little girl, always hanging off my shoulders. A few hundred years later, and you're all grown up. Urakusai, how much time do you have left? Among Us कौन कौन खेलेगा मेरे साथ? Not much. मेरे को That goes बताओ for all Among of Us us, है मेरे पास. We've all got to go Uncharted back where we came नहीं from यार. in the end. ये स्टोरी है. Everyone's quite content in many ways, but they still can't help but ask, are we ever going to have another Hyakyako? Don't you worry about that, Urakusai. Arrangements are being made. When my bell rings, it means the moonless night is upon us. ओके ठीक है चलो फिर कल दोपहर की स्ट्रीम अपनी Among Us होगी. Fantastic. मेरे को Miko, बता it's been देना मैं nice पहली catching बार up, खेलूंगा Among Us. but I'd better conserve my energy if I want to stick it out until then. So, I'll be on my way now. All right. Goodbye then, Urakusai. One last thing, Miko. I just want to know, have you been well all these years? I've been great, of course. ओके कल Every दोपहर की day is Among a Us happy होगी थी. one. Especially these days. Not only do I have my light novels, but I've also met these two delightfully nosy outlanders. And even A is finally starting to come to her senses. Quite a miracle given how pig-headed she can be. Oh, well, great. That's fantastic. Urakusai, you'd be right at home in this era. A great storyteller and artist like yourself would be the Yai Publishing House's ace in the hole. And I would personally be hounding you over your next installment. मेरा 200 MB का तो है डाउनलोड कर लो. He disappeared. Are you awake? How are you feeling? Are you all there? Here, like last time, repeat after me. Oh, you beat me to it. Looks like your brain is intact. So, your first possession, hmm? What was it like? पीसी वाले मोबाइल वाले के साथ खेल सकते हैं ये मेरे को नहीं आइडिया. चलो कल करते हैं. वोट कर दो भाई कौन Good. कौन खेलेगा. Saves me from having to explain everything again. Hearing Urakusai admit defeat has put me in the most wonderful mood. In return, it's only... Yes, though they only represent a tiny proportion of the memories in the ley lines, it will still be quite a sight to behold when the time comes. Since you've come this far, why don't you do one last thing for me, hmm? I'll need your help with the ritual.
You cannot be serious, Miko. After all that, you still have more errands for us? Huh. You guys teamed up to scare Paimon just now. If you think Paimon's gonna do anything you ask for, think again! Oh, come on. I'm really only asking you to finish what you started. सर्च मार दो कोई ही. अरे हाँ भाई, कोई Paychecks are सर्च मार still के in my बता दो. hands. Paimon's paycheck? आईफोन ले लो, दिला रहा ना अपने को. तरुण तरुण तेरा आईपैड भेज दे यार, करता उससे. Well, there's no way out now. We're in too deep. फाइनली कंप्लीट स्टोरी. स्टोरी कंप्लीट हो गया भैया. 2 स्टोरी 3 स्टोरी बची है. आर्क स्टोरी है ना, वो खेलो भैया. अभी भी जाना यही मिको के पास. $1,10,000 दूंगा. हाँ मेरे भाई. Well, hello there, my little helpers. So nice of you to join me. You're right on time, too. आपका नेट हग रहा है. As if we had a choice. नहीं, सही कर रहा want है. our paychecks. 0 पैकेट लॉस चेक कर रहा. So, Miko, what exactly do we have to do to make this Hyakyako happen? रिक्वेस्ट टाइम आउट भी नहीं हुआ. Clear, we actually have no idea what it even means. It might sound ominous, but to put it simply, the Hyakyako is just a gathering of the yokai. Back in the day at yokai gatherings, once everyone had had plenty to drink, one by one they'd start soaring into the sky with their yokai powers. There were so many of them that their silhouettes would block out the moon. But now, the yokai memories that leak from the ley lines are weak. They are no longer able to fly. So I will be performing a convocation ritual for them, gathering all the wandering memories together in one place. When the time comes, they will gather in the sky above the Grand Narukami Shrine. Once their energy is spent, they will be satisfied and return to where they belong. All the preparations for the ritual have actually been made well in advance. Remember the incantation and the mention of moonless night that I added to our novel? Oh, yeah! Something about reciting the secret spells of Lady Kitsune on a moonless night. That's the one. Actually, it's not a wish-granting incantation at all. It's a spell to help calm the ley line memories. When that time comes, let's all pitch in and help send them on their way. I will start the ritual preparations shortly, and at that time I need you to do 2 things. First, tell the shrine maidens to leave the mountain. During the Hyakyako, a whole swarm of yokai memories will be hanging around in the air above the Grand Narukami Shrine. Having the shrine maidens leave avoids the bothersome issue of someone potentially getting possessed. After that, I will commence the ritual, and the memories will begin to congregate. This will take some time. I need you at the foot of Mount Yogo during this part to keep an eye on nearby monster activity. The memories are normally dispersed and don't pose a threat, but when their energy is concentrated, it is likely to disturb the monsters. They may see this as an opportunity to try and make it up the mountain. I need you to fend them off so that that doesn't happen. Alright, got it. Then what? Well, if at that point you felt like coming to the shrine and getting a close-up view of the yokai, I wouldn't say no. Okay, let's get going. भाई कितना बड़ा है. अरे ये भूतिया इंसान. नहीं ये साली वो पजल थी तो बहुत मारूंगा इसको. Descend the mountain? Are those Lady Gucci's orders? Yep, Miko said the ritual she's gonna perform soon might pose a physical danger to you all. I see. I'll evacuate everyone right away. What about you? We'll be taking care of a couple other things for her. And once we're done with that, we're gonna come back and do the ritual together.
It seems like Lady Guji places great मैं trust ट्राई in कर me. रहा हूँ Lady कहीं Guji's जॉब मिल never जाए तो allowed सही anyone रहेगा else to be in her presence when she's मिल जाएगा भाई conducted कोई बात rituals ना like this in the past. Thank you for helping with the ritual, and good luck. Don't worry, we're much stronger than we look. Miko's about to start the ritual. Come on, let's go deal with the monsters down the mountain. अब इसकी माँ के नजदीक में नहीं हूँ यहीं से उड़ के जाऊंगा भाई पजल देना दिमाग खराब हो जाएगा मेरा वाह इतने आसमान में है तो ले लो गो टू द मेन रोड अंडर द मेन रोड पे हूँ भाई These monsters look really riled up. Yep, let's get rid of them as fast as we can. Then we can get back in time to see the yokai. Alright, here they देखा हमारी स्ट्रीम पे पढ़ाकू लोग भी है इधर कुछ ज्यादा नहीं है कुछ ज्यादा लोग नहीं है Let's light it up. बारिश हो रही है बेटा बहुत पेलूंगा तुम लोग को सोच समझ के मारियो बारिश हो रही है Dream work. Time for a light show. माँ कसम लेके दे रहे लोग तो उसको मार के नहीं सकते Let's light it up. अब आओ I'm going in. Ring cutter. The fuse is lit. एक गया दूसरा भी जाने वाला है Adventure time. Wait, hear me. काम हो गया कितने मॉन्स्टर है भाई कितनों को मारना है Everybody stand back. माँ के लोग तो पैर है भाई अरे भाई क्या कर रहा है ये तूफान वाले बाबा को पहले मारो Time for a light show. इसको बाद में लूंगा बेटा आ जा Know my sword. Witness the power of good. क्या भाग रहा है खाली अरे भाई ये तो बस Going somewhere? My blade! Say no more! फसा दी बड़ी भी है कहाँ पर है वो बड़ी Light it up. I'm going in. Fire hazard. There's so many of them. Come on, you can do it. भाई I dare you! लगा रही है भाई लगा रही है Don't hold back! Allow me to strike first! Show me what you've got! Everybody stand back. I dare you! Don't hold back! आते जा रहे भाई आते जा रहे Rain outlines your I dare you! ring cutter. Time for a light Show me what you've got! Gotta watch it.
मार ले, सबकी हेल्थ सही करना है, सबकी हेल्थ बढ़ाना है। Barbados. Fuse is lit. Don't hold back. Alright, that's the last of कौन बचा है? तेरी माँ की और तेरी रंग गाड़ी How long do you think the ritual is? नीचे है, The Grand Narukami Shrine and नीचे है। साली बहुत हो रही है। This body. खत्म हुआ कि बचे हैं भाई? और कितने? खत्म माँ की है, करे भाई। ये क्या है भाई? So many! They're everywhere! Yes, the memories of the yokai. They haven't been able to relax and soar through the air like this for a long time. Come with me. You all right, little one? You look a little nervous. It's just, Hyman's never seen anything like this before! Whoa, they've really blocked out the moon! It does look a little intimidating, doesn't it? But I know them. They may be loud and brash at times, but they are good and brave souls. Even after losing their lives in a brutal war, they have never given in to grief or मुझे despair. लेके चले हैं जाना अगर जापान जाओ। Their time is short. बस है भाई। Do they really have to go? It's a feast, and all feasts come to an end. Since you're sorry to see them leave, why don't you do the recital along with me? O Hakushin, cause of this enchantment, in reverence I perform this rite. In reverence, I perform this rite. To be a guiding light. Wow, so beautiful! Look! Lights are coming from Inazuma City! The book says, recite the secret spells of Lady Kitsune tonight, and our wishes will come true. O Hakushin, cause of this enchantment. I perform this rite to be a guiding light. Your unrivaled power will be honored eternally. क्या सीन है भाई? ऐसा लग रहा गोकू अपना स्पिरिट बम बना रहा है। Murakusai, you asked if I was doing well. Really, every day is a happy day for me. But watching you all leave now, I can't help but feel a little lonely. Just a little, of course. ऊपर गोकू खड़ा है, स्पिरिट बम बना रहा है भाई। अभी गिराएगा। Just as I thought, the ritual went very smoothly. Thank you both. Oh, I'm great. But the look on your face just now... I'm fine, seriously. Really,
No. Honestly, you two. Miko. Fine. Well, if you're dead set on doing something for me, you can treat मार्जिन me बू to को a मारने meal. आया Sure, no problem. A meal it is. Okay. Well, see you soon then. खत्म नहीं हुई wait until the appointment time for the day appointment time कब का है भाई okay next day रेस्टोरेंट ओके अगला दिन कर दो भाई सेम डे Today is the day we agreed to treat Miko to a meal. The venue is Uyu Restaurant. Let's go! दूर मेरे दोस्त के चाचा किए Wait is unbearable. How is the next chapter of the miraculous adventures of the traveler not released yet? It was quite a surprise when the moonless night finally came. Yeah, that huge black cloud over Mount Yogo that night. उनका लड़का चीने मकाऊ Form out of दिखता nowhere. But then nothing happened after I वो made a जाहिर wish सी using बात the है method in that book. Yeah. I guess light novels are just fiction after all, huh? That night was definitely the nail in the coffin for the incantations from novels fad. Still, something tells me the miraculous adventures of the traveler will remain an interesting series for a long time to come. Huh? Paimon can't see Miko anywhere. Guess she's not out here. Maybe she went inside already. Let's head in and look for her. Ah, my little friends. There you are. हरा हरा ना Miko, what is this? You started eating without us? I did, yes. You're paying after all. The thought of being able to eat the most expensive dishes and drink the finest sake, all for absolutely free? Oh, I just couldn't wait any longer. Ah, boss, see these two faces here? Remember them. They're the ones picking up the bill later. अभी पोके पाएमोन की लगेगी अभी चिढ़ेगा What's gotten into you? Come on, sit yourselves down. You have to try this fish. It's found exclusively in the waters around Seirai Island. They shipped it to Inazuma overnight, and it was still alive right up until I ordered it. Or maybe you'd rather try this? I know. I normally can't bring myself to drink sake this expensive either. If you don't drink alcohol, that's fine too. There are all kinds of fruit juices covering the whole price spectrum. Miko, you were outrageous. Last time we were here working on the novel, all you ordered for us was the plainest kushikatsu! Strange. I remember no such thing. Oh, so what? You did offer to treat me to a meal, didn't you? Anyway, I am something of a VIP, you know. Wouldn't you find it embarrassing to treat me anything short of lavishly? Miko, this meal is going to be super expensive! Aren't you afraid we won't be able to afford it? Oh, don't you worry about that. You can most definitely afford it. They're still printing your light novel by the batch, you know. You have quite the generous payment due. What? Aw, darn it! She tricked us into this! Miko was after our Mora from the very beginning!
on your faces right now. Too perfect. Oh, by the way, since nobody's wishes came true on the moonless night, novels with incantations are no longer in vogue. So you'll have to come up with something new for the next chapter of The Miraculous Adventures of the Traveler. The deadline is looming. I'm counting on you. Complete. हाँ भाई कैसे मुंह कैसा हो जाता पाइमन का भिखारी बना के छोड़ दिया। अरे यार बहुत कम है रे। मैं जो देखना चाहता था देखा ही नहीं। अभी 40 हुए हैं। एडवेंचर रैंक रिवॉर्ड। ओके एडवेंचर रैंक बढ़ गया हमारा 52 हो गया। क्या बात है भाई क्या बात है। हम 52 पे है हमारा भाई। हम 52 पहुंच गए। चलो वेलोरेंट। ओके चलो वेलोरेंट। हेलो घर पे जाओ। ओके इसी के साथ एक विश करते हुए एक सिंगल विश। सिंगल विश। मोना चीची कोई तो नहीं निकले। नहीं निकले। तो किसका दिल कर रहा है वैलोरेंट खेलने का। अरे शुभम तू भी ज्वाइन करना यार वैलोरेंट। पीसी है तेरे पास। शुभम टर्बो गेमिंग भाई बहुत मजे करते हैं हम लोग भाई। ट्रोल करते हैं मजा आती है। मैं अपने एक नया अकाउंट बनाया उससे खेलने में मजा आती है भाई। हेलो डेमन भाई वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो। आपका नाम का बंदा है इधर। नहीं ये डोमोन है डोमोन देखो भाई परफेक्ट नाम की जगह गिरा। सही टाइम पे आए हो तुम। खाली एक चीज का फर्क है ई बस। The dream of being number one is in the hands of my disciples now. मैक है उस पे गेम थोड़ी खेलूंगा। अरे तो मैक पे क्यों नहीं गेम खेलोगे। मैक पे चलता है या मेरा एकदम सही टाइम पे आया है इस जगह पे। डेमन भाई आए। डेमन के जैसा नाम भी आ गया इधर पे डोमन। मैक पे वॉलो चलता है। हाँ आराम से चलता है। तो मालूम है ये छत पे साला क्रेट्स पड़े रहते हैं। कौन है भाई। दुनिया भर की कोडिंग करनी पड़ती है। अरे कुछ नहीं करनी पड़ती। ये बेटी कुछ है तेरे पास तो दे दे। हुआ क्या क्या भाई। क्वेस्ट फिनिश हो गया। ईटो भी निकल गया। बस ईटो का आर्टिफैक्ट नहीं हुआ। किया है मतलब लेकिन मिला नहीं। बस बेटा बाकी बाद में कर दूंगा। अभी जाओ। अरे हाँ मेरे को ये बताना भाई ये गौरव को क्या लगेगा भाई। इसको कौन सा आर्टिफैक्ट लगेंगे। एनर्जी रिचार्ज वाले लगते हैं इसको सुनने में आया है भाई। तो एनर्जी रिचार्ज एग्जाइल मिल जाए तो एग्जाइल लगा दूं क्या। 20% एनर्जी रिचार्ज है इसके। मिलता है ना भाई नॉर्मल विश में कुछ भी एनर्जी और डिफेंस ऐसा मिलना चाहिए ना। ऐसा तो है ही नहीं अपने पास। इनको क्वेस्ट जमा कर लूं फिर वैलो खेलते हैं।
आज कोई जाएगा नहीं, वेलो पूरा देखेगा, मजे लेंगे हम। मेरा 63 विश कर दिया, अभी तक कुछ नहीं मिला। मिल जाएगा मिल जाएगा, चीची मिलेगी, डोंट वरी टर्बो भाई। ये क्या बकवास कर दिया, ये क्या छुपन छुपाई खेलेगा क्या? क्या कर रहा है? भाग तेरी माँ की आगे। पट पट, नहीं खेलूंगा तेरे साथ। कहाँ गया रे? नहीं खेल रहा तेरे साथ, जा। चलो वेलो खेला जाए भाइयों, 2 मिनट वेट करना, हम आए हैं अभी दूसरा गेम चालू करके। थोड़ा सा ब्रेक। टर्बो भाई जाना नहीं, मजे देखना बस। अगर कॉल ऑफ ड्यूटी होता तो बात अलग थी। ओके कोई ना, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलेंगे। डाउनलोड करता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी, कोई इशू नहीं है। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, जिसका मन है भाई आ जाओ। देखो तरुण बुलाया मेरे को और खुद ही चालू भी नहीं किया गेम, वाह। आते भाई तरुण आप। टाइटल में क्या लिखूं? लिख दिया ना, देन वैलोरेंट, खत्म। सब भाग गए? नहीं नहीं है सब। चलो भाई तरुण भैया आ जाओ। ये मेरा पहले मेन पिलर था, अब हम उसकी जगह दूसरा लेते हैं। स्टार्ट। इसका लेवल 20 करना है, फिर इसके अंदर कॉम्पिटिटिव करके लो रैंक लाना है ताकि मैं इन लोग के साथ खेल सकूं। मैं तरुण, टर्बो और नाइट बॉट है बस। चलेगा भाई, तुम ही लोग देखो। कोई ना, आएगी पब्लिक आएगी। कोई ना भाई, एटलीस्ट कोई तो देख रहा है। Match found. मेरा पीसी अभी चल नहीं रहा, इसको अपग्रेड करना है। अरे इसको लोएस्ट तो लोएस्ट ग्राफिक कार्ड लगा के भी चला सकते हो भाई। मैं बिना ग्राफिक कार्ड के वैलोरेंट खेल रहा था कितने दिनों से।
एसेंट है। क्या एसेंट क्यों आता है भाई? They think I'm an old dog? I'll show them just how many tricks I know. मैं सोवा लिया। रात को ईटो अपग्रेड करेंगे और नहीं, रात को ईटो का वेपन अपग्रेड करेंगे। ईटो को 80 करो ना। हाँ तो वेपन तो कुछ ना कुछ कर दो, कम से कम काम चलाने लायक तो रहो बेचारो। फिर भी चार्ज अटैक में 2000 ले रहा है डैमेज। 2000 बहुत कम है, वो 25-30 हजार से ज्यादा देता हाँ है। तो अपन आर्टिफैक्ट चढ़ाए कहाँ पे अभी तक उसको अच्छा वाला? 2 ही तो दे के रखे 2 सेट। नहीं आप 2000 से कुछ हो जा रहे हो ना, उसके बोल रहा हूँ। नॉर्मली चार्ज अटैक ऐसे ही मार रहा था। अगर मेरे पास होता था ना वो, मैं आराम से उसको 50,000 का ले लेता था। After we win, तो तेरे I'll buy पास you है a सब drink if कुछ। you share a memory with us. क्या है मेरे पास कुछ नहीं है। मैं ग्रैंड मत करो ग्रैंड। सामने वाले पे क्या क्या है? अच्छा सोवा भी है, रेस भी है यार, शॉट ही नहीं चला पाऊंगा। रेस लेना था क्या? हाँ रेस का बूम बॉट है ना, वो क्रैक कर लेगा साला स्मोक के अंदर मेरे को। नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं रेस लेना था बोल रहा हूँ। तो ले लेना चाहिए था, तो लिया क्यों नहीं? ट्रोल होता तो मजा आती थी। तो रिवील कर दूंगा और क्या। Launching smoke. Multiple enemies B. Launching smoke. ये तेज वाला। वो भाई Enemy spotted B. मैं गंदा मरा, बहुत गंदा हगा हूँ। Last player standing. वॉल्ड है। वॉल वाले को मारो, वॉल वाला जो निकलेगा ना उसको मार उसके पास स्पाइक है। बहुत सही एक लेफ्ट में। Spike down B. सिटी से आ रहे। रिवील Scanning ahead. Found them. वहां से नहीं आ रहा गया, स्पाइक लेने गया वो। वाह फीनिक्स को ढूंढ रहा हूँ मैं। फीनिक्स साइड पे ही बैठा था। तो ये बात पहले बता ना, आप क्यों बता रहे हो? मैं सोच रहा हूँ पीछे से आएगा वो। अरे ये बात पता है तो पहले क्यों नहीं बताया? अपना हथियार रेडी मेरे को दो भाई। कोई एक पिस्टल दे दो मेरे को, कोई मेरे को एक पिस्टल दे दो। नहीं है कुछ। जीरो है। Revealing area. Smoke's down. मिड पुश है। पुश है कहाँ है? 10 भी गया साइड पे। Okay. Enemy spotted B. Enemy spotted B. Spike planted. अरे भाई कितना पड़ी उसको रेस को? 3 मिनट को पड़ी उसको। रेस Last player standing. 60 ब्रिम सॉरी ब्रीच 60। One enemy remaining. वो वीक है। बस नाइस हो गया। डिफ्यूज कर जब मार के सीधा। हाँ Clutch. My babushka told me not to brag, but for this I make an exception. I'm impressed, Sova. मैं शॉट ही खेलूंगा। But in your hands, you keep in control. Need equipment. देना
मैं आज शॉटी ही खेलूंगा। अरे टाट मेरे को देना। हाँ Thanks. They've got nerve. हटो। Scanning ahead. ये पड़वे आ ही नहीं रहे। ये पे तो आने का नाम ही नहीं ले रहे। Launching smoke. स्पाइक उसके पास। Spike down mid. Launching smoke. Reloading. हेड का है। Enemy spotted. Deep. Deploying Smoke's down. Phoenix on B main. साइड के अंदर दूसरी। There they are. Last player standing. अरे वासिम भाई, अच्छा शॉटगन है। सारे लो है देखो। Jackass. वो दो लोग भी लो है। Right here. 50 और 62। 30 seconds left. One enemy remaining. अरे शिट यार। भाई क्या था ये? 62 था यार ये वसीम भाई। अरे नहीं पड़ी, वो हल गया, मैं क्या करूं? Just batteries. And I need a recharge. वो एम पे से हट गया। कोई ना। आरएनजी स्पेक्टर था ना उसके पास। मुझे मरा कैसे नहीं समझ नहीं आ रहा ये दो। क्या बोल रहे भाई? कहाँ रहता है कहाँ? घर पे। अबे तेरा घर कहाँ पे है? इतनी कंपनी मारी अब मुंबई में यार, और कहाँ पे? Scanning ahead. साले इधर आने का नाम ही नहीं लेते। Smoke's down. बी हो गया। Deploying drone. Oh lol. Spike planted. शॉट क्या बचा है भाई तू? There. Nice shot. Reloading. Last player standing. बहुत हो गया इसका तो बहुत हो गया। बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। हम शॉटी बाद में Pay खेलेगा, attention. अब पहले Might learn धोएगा इन लोग something. के। इनकी माँ की बहुत हो गया इनका। अरे पैसे क्यों नहीं बच रहा है बैठ के? आओ सालो, अभी बी पे नहीं आएंगे साले। अब बी पे रहो, आप ए आ रहे हो, बी आ रहे हो लोग। Launching smoke. कोई नहीं है। Enemy down. My ult's ready. Right here. Open up the sky. भाग रहे मार चले लोग को। One enemy remaining. बस इधर ही। Spike down B. राइट हैंड पूरे देख के ड्रो ने आ गया। बोल रहा इधर ही। भाई गन इधर नहीं चाहिए, अपन शॉटी खेलेगा आज। Surrounded by minha família. We won't lose. कोई ड्रॉप देगा भी साला। 26 रह रहे, कुछ कम रहना दे देना उसको ड्रॉप। रहना कुछ उगाड़ भी नहीं रहा है भाई, ड्रॉप दे दे एटलीस्ट। रहना ब्रो ड्रॉप दे दे उसको यार। छोड़ो भाई, मैंने अरे उसके पैसे नहीं है भाई, उसने एबिलिटी नहीं खरीदी। That breach is asking for it. अच्छा चलो कोई नहीं। Smoke's down. ये आ रहे क्या? हाँ यार भाई मैं यहाँ पे सर अल्ट करने ठहरा हूँ।
Off your feet! Spike down A. Joke's over! You're dead! Launching smoke! Enemy spotted A. बे मेरे को मारेगा। स्कैन करके वो कर दे। Smoke's down. स्पाइक लेके भाग गया, स्पाइक लेके भाग गया वो। पड़म पीछे बैटल पड़ी, उठा ले भाई। ब्रेम तेरे पीछे बैटल पड़ी है। अबे फिनिक्स किधर है? किधर है? फिनिक्स मेरे को डाउट था ये। 30 seconds left. प्लांटिंग में डंड है। बस है, अस्ट्रा इधर पे। Spike down B. साला गन मांग रहा उसले कोई दे भी Out of नहीं रहा। charges. क्या गन होता तो दोनों यानी को कोने में मार बैठ, कोने में बैठा, ऐसे मत बैठ। ओपन दिख रहा है तू। भाई इसको चुप बैठा दो भाई कोई प्लीज। 10 seconds left. आया इस पे आया। आने देना मेरे को क्या, जाओ प्लांट कर लो, जाओ मजे करो। Stim beacon down. Some things you just can't teach. मार भी नहीं पाया उसको। Once more into battle. ए किसको चाहिए? किसको चाहिए? मेरे को दिला। मुझे चाहिए। रुको। दो दिला अपने आप गन मिल जाएगी तेरे को। ए मैं तेरे को बाय कर रहा हूं, मेरे को ऑफ बाय कर दे। हां चलो। अब मैं किसको भी बाय ऑपरेटर के फिटनेस पे भाई। हम गरीब आदमी है भाई। वैंडल किसके ने? ए रेस तेरे पे वैंडल किसके ने? हम बकबक कर रहा है। Launching smoke. अरे मां कसम भाई। Smoke's down. Launching smoke. Spike down B. ए पे जा रहा है। वो स्पाइक गिरा है यहाँ पे। हाँ इधर से भाग रहे हैं। यहाँ राइट पे तेरे। यहाँ से लेफ्ट में उठा और वहाँ पर यहीं पर सामने होगा। नाइस। Spike down mid. यहाँ बैठना पागल, यहाँ पे बैठा है। यहाँ मत बैठो, राइट में उठा। अरे इसको म्यूट करो, बोलने वाले को मारो। कितना बकबक कर रहा है लोड़े। अबे चुप बैठ ना मेरे भाई, मेरे को पता है वो वहाँ से आने वाला है। One enemy remaining. मेरे को ये बहुत प्रो बन रहा है, ये प्रो बन रहा है। तेज है। ऐसा रुक जा, नहीं जानते इसको ट्रोल करेंगे। मैं तो म्यूट कर दिया भाई, बहुत बकबक कर रहा है सबसे। तू क्या चुप नहीं बैठ रहा है? Stim beacon here. वाह, एक टैग हुआ है। दो लोग अल्ट टैग हुए थे। वो दो लोग कौन है नहीं पता मुझे। कवर दो। Spike planted. Fire's out. Revealing area. Last player standing. अरे वसीम भाई। Smoke's down. अरे भाई दबाने का टाइम ही आ गया। भाई उनके सामने टीम के एक्स्ट्रा हैक करो, तो रिपोर्ट कर रहा है। Shoot the bad सॉरी guys. उल्टा बोल दिया, How's that रिपोर्ट for a हैक कर रहा plan? है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे भाई हैक कर रहा है, रिपोर्ट करो। कौन कह रहा है? कौन कर रहा है? वो एक्स्ट्रा उनका जम करते करते शहर से हेड मार दिया। अरे भाई होता है, लगता है कभी कभार। भाई 3 राउंड लगातार नहीं लगता मेरे भाई।
क्या हुआ स्क्वेड लगा है सारे। हाँ जंपिंग हेडशॉट लगा है, बोलता है हैकर है। भाई कॉम भी खेलना भाई कॉम भी खेल भाई, पता चलेगा देखो। भाई इसको पता नहीं है मैं कैसे मरा। Launching smoke. Scanning ahead. रैंक क्या तुम्हारी? मैं तो नया हूँ। सुबह रैंक। Launching smoke. भाई सिल्वर 3 हूँ मैं। ओह माय गॉड सिल्वर 3। अरे नहीं ऐसा इतना बड़ा रैंक। Smoke's down. Wall raised. Spike down B. भाई इतना बड़ा रैंक मैं फर्स्ट टाइम देखा। Reloading. हाँ मिड जा रहा है रेस तेरे पास आएगा, रेस दिया रहे हो। Fire in the hole. Pray for me. मिड में एक Stim beacon here. Enemy spotted mid. One enemy remaining. पता था बड़ुए तेरा आने का 30 स्टाइल ही seconds पता चल left. गया मुझे। वही है Reloading. बेचारे Look का at फिर से me. यूज ही हुआ I है। know that I am by your side. Need a drop. अब देखो कोई नहीं ले रहा है। लेना मेरे से, मेरे को गन दिला दे। मेरी शॉटी मेरे को दिला दे। पैसे कहाँ हैं? शॉटी दिलाने के थे ना तेरे पास। कौन दिया मुझे कोई? सेज दिया। वाह ये लोग ये पे आते क्या नहीं ना। आए जब तो आप स्मोक पे कर रहे हो मेरे मुंह पे जब स्मोक नहीं करते तो मुझे मार Smoke's देते हो। down. Reloading. ए भाई मैं देखने गया था भाई, मुंह पे पड़ गई। Joke's over. You're dead. ट्रेड ले रहा चुप रहे। Spike down mid. Barrier created. They demand a fight. Who are we to disobey? अरे इतनी जल्दी सरेंडर पे आ गए लोग। आप ये खेलेंगे, हर गन ट्राई करेंगे, हम सब गन ट्राई करेगा। अब ये गन की बात। Safety's off. ए आ रहे लोग। अरे बाप रे बाप बच गया मैं। Launching smoke. Reloading. Wall raised. तेरे पास आएंगे सो। अरे 3 लोग आ रहे हैं। 2 मुंह दिखा वहाँ पे। वसीम भाई आप पलट करते 2 मार जाते हैं। गन बोलते Spike down. एक साइड पे है। Here. ओ भाई One enemy remaining. दे दिया। Spikes here. मीडी है वो, मीडी है। 30 seconds left. क्या कर रहा है ये? बराबर देख रहा है सोच। तेज नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। राइना पूरा ऊपर जा रहा है। There. बस
स्प्लिट हो जाओ 10 seconds left. नहीं आएगा। टाइम वेस्ट बहुत सही। Last player मत जा standing. रहना मत जा Clutch. Last round before the switch. मजा आ रही है शॉटी अपने अच्छी Spend it all before it's gone. तेज के साथ तो बुरा हो रहा है। फीनिक्स का फ्लैश बहुत भयंकर है भाई। डॉज भी नहीं कर सकता उसको ढंग से। You want to find it? Right here. भाई 2 को ले लिया उसने तो 2 को ले लिया। Open up the sky. Right here. यहाँ आगे अंदर। Right here. One enemy remaining. Spike down B. Enemy spotted. Reloading. Revealing area. Stim beacon down. Switching sides. मेरी बारी टर्न करने की। Firepower? I got this. पंडिका था माफ डिफॉल्ट प्लान। Reloading. वाह वो 2 लोगों को कैसा मारा पता है वसीम भाई? वो 2 लोगों को मैं शॉक डर्ट से डैमेज दिया 80 इसमें लो रैंक आ जाएगा ना जैसा खेल रहा। क्या लो रैंक ये कॉम्प भी थोड़ी है। अगर कैसी खेलता रहा तो लो रैंक मिलेगा ना। इसको पता भाई मुझे नहीं पता। Reloading. मरा ही है। बच गया। Hola. Smoke's down. Revealing Out of area. charges. Reloading. Enemy spotted B. 2 लोग डैमेज खाए। Reloading. Reloading. साला गोलियां खत्म करके देता। चलो बे अंदर क्या कर रहे हो? Enemy spotted B. Enemy spotted B. भाई वॉल के थ्रू मारा है। There. Reloading. Right here. डिफॉल्ट प्लान कर दो One enemy remaining. डिफॉल्ट करना। इतने डैमेजेस दिया बाप रे बाप। भाई तू तो पता नया है अब डिफॉल्ट प्लान कैसे बताते हो क्या होता है? डिफॉल्ट मतलब बोलो तो ऐसा डिफॉल्ट वैसे ही बोलते हो डिफॉल्ट और अरे कैसा मेरे को पता है मेरे भाई तेरे को क्या होता है डिफॉल्ट क्या होता है भाई डिफॉल्ट पता नहीं कहां पर है तू तो नया बोला था ना अपने आप को तो वही तो बोल रहा हूं डिफॉल्ट प्लान करना भाई। Drink some water, reload your mags, and let's get back out there. अभी मैं डिफॉल्ट प्लान बोल रहा था डिफॉल्ट करना उसमें नया चुनने की क्या बात है? पता है भाई मेरे को पता नहीं डिफॉल्ट का होता है पर तेरे को क्या पता भाई डिफॉल्ट का होता है? अबे तू सिल्वर 3 है भाई हम बिना रैंक के डिफॉल्ट है भाई मेरे। अरे खुद तो मेरे को पता है बहरो आदमी है समझ में नहीं आता मैं बोल रहा हूं मेरे को पता है पर तेरे को कहां पता है कि कहां पर है? मैं YouTube पे देखा। उसको पता नहीं है तो बताएगा ना दोनों क्यों बोल रहा है वो भी जरूर बैठ ना थोड़े के बाद क्या बात कर रहे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बात करते अरे यार तुम रहने दो भाई डूब मरो भाई। बोझड़ी का इतना बकबक कर रहा है तब से लोडू बोल रहा है बोझड़ी उसका बाप लोडू है। Okay. Scanning ahead. There they are. Right here. Stim beacon here.
Fully smoked. Wow. Full area smoke. Grenade! नीचे एक बंदा है। मेरे को कवर नहीं किया, बहुत मारूंगा। Spike planted. One enemy remaining. Right here. पूतिया। AFK मार्केट B। डिफ्यूज कर रहा है वो, लग रहा है। Molly. डिफ्यूजर आई थिंक डिफ्यूजर है शायद से। Flawless. रीना बोल रहा है। अच्छा नहीं हो रहा। अबे रीना तूने वाले दे। Stay taut as a bowstring. The fight demands it. सेज की मजा लेते हैं, इसको स्पाइक देके मजा लेते हैं। दो डिफॉल्ट प्लान करना। हाँ भाई हाँ। नहीं उसको ही पता है ना डिफॉल्ट क्या है, ये लोग को पता नहीं है ना। हम लोग को नहीं मालूम, इसलिए बोल रहे हैं। कैसा वॉल कर रहा है, कैसा वॉल Spike down mid. सबकी मौत का कारण बनेगा। Our carrier's down. रेस इसका ये सब ये देख। बंदा यहाँ पे। अरे आप ही के बड़वा कैसा वॉल कर रहा है भाई। तो देखो किसने बोला भाई यहाँ पर आने के लिए। सिल्वर रैंक है भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, चार मेरी पास कीड़े भाई, इतना क्यों बोलना है तेरे को? ठीक है समझ गया। सिल्वर रैंक वाले को वॉल भी नहीं आ रहा है भाई, क्या बात कर रहे हैं? तो तेरे को किसने बोला? बस कर वसीम भाई, मजे लो ना, आप भी लो ना भाई। मेरे को तो नहीं पता डिफॉल्ट प्लान क्या होता है, मैंने बोल दिया। वॉल भाई, वॉल किया ना, ओपन वॉल किया ना पूरा। तो पता नहीं, सपोर्टर वॉल था ना। आप देखते हैं भाई कैसे जीतते हैं भाई। क्या वॉल था भाई, दो लोग मर गए उससे। ठीक है गेम प्रो कर रहा हूं मैं। प्रो क्या होता है भाई? प्रो चीज होती क्या है? अच्छा आप समझा। ये लेने का और ये लेने का, थ्रो करने का। ये लेने का और थ्रो करने का। चलो आ जाओ, कौन करता? बिंदास सेज वहीं रहना। हाँ सेज यहीं रहना, तेरा रहने का भी कुछ मतलब नहीं, वहीं रहे। सिल्वर रैंक ऐसे खेलते क्या भाई? पता नहीं, मेरे को पता ही नहीं था सिल्वर रैंक कैसे खेलते। कितना लंबा चलता है ये? 13 और 13 राउंड जितना रहता है। उसको स्पाइक दे दिया। हाँ बहुत सही, स्पाइक ले ले। मैं तो मजे लूंगा। बोलो सिल्वर रैंक वाले को गेम खेलने नहीं आता क्या? हारता है क्या ऐसे ही? अरे सिल्वर कलर की प्लास्टिक रैंक वैसा है। Revealing area. There. Smoke's down. Joke's over. You're dead. ओहो, आ रहे मिड से आ रहे वो लोग। आने दो। Launching smoke. सिल्वर वाले अनरेटेड में भी कैंप करते क्या भाई? पता नहीं था। हाँ भाई। 30 seconds left. देखिए मरेगा कैसा। तुम्हें कैसे ही बताओगा, तू कम सिल्वर पहुंचा ही नहीं कभी। Smoke's down. ऐसा कैंप करके तो नहीं जाऊंगा भाई किधर भी मैं। भाई इसका कमबैक नहीं होगा, डोंट वरी। पबजी बैन हुआ तो तू यही है क्या भाई कैंप करके? इसके मजे लो। नहीं भाई। 10 seconds पबजी left. फोन में तो खेल पाया था, तो फोन भी नहीं होगा भाई तेरे पास तो। भाई इतना भी कैंप मत कर। घर से निकाल Stim beacon down. होता भाई। इससे अच्छा भाई तू गेम डिलीट मार ले भाई। इससे तो भाई ठीक है कोई नहीं। वसीम भाई इसके ऊपर आ जाओ, अब गेम होते ही बोलूंगा मैं। स्टार्टर के नीचे मजे लेते हैं, रुकना। My smokes can block the enemy's line वो of मत sight. करना, मत Once करना, they're मत blind, करना। we move.
ये रायना और वो दोनों साथ में। Scanning ahead. There. Headshot. Reloading. वाह भागते हुए मार दिया। Spike down B. मेरे को रिवाइव नहीं करेगा, मेरे को रिवाइव नहीं करेगा, मेरे को नहीं करेगा, मेरे को मालूम है। क्या लिखा था सामने? बूस्ट तो अच्छे है भाई उसका और सिल्वर। Spike down B. एक फ्लैश है उसके पास है बचा हुआ। ड्रोन करके वापस सीधा Player standing. अरे नहीं करना था कुछ भी। रेस भी लगता है उसके साथ ही है, रेस भी लगता है उसके साथ ही है। क्या पता, खुद गाली दे के बोल रहा है टॉक्सिक हो रहा है भाई। भाई हाँ, क्या बोला बताना, क्या बोला बता। One enemy remaining. 30 seconds left. अपना रेस रियल सिल्वर 3। अब भाई हो भी सकता है भाई। प्लांट कर दे फिर नाइफ करना। 10 seconds left. Spike planted. My ult's ready. ये देखो सिल्वर रैंक वाले ऐसे ही बोलते क्या भाई टीममेट्स के बारे में? पता नहीं था मुझे। समझ ले भाई, हाँ ऐसे ही। तो क्यों खेल रहा है भाई? डिलीट मार लेना गेम, टीम के साथ खेलने नहीं आता है। मैं ये बता ये बता, मैंने तेरे से पूछा बोलने के लिए कुछ, मैं बोला था कुछ बोला, ते बोला कुछ बोला मैंने। तेरे को कुछ बोल रहा क्या? तू क्यों सुन रहा है? सेज बोल के बोला क्या मैं? भाई तुमको पता क्या चूतिया बंदा है भाई, चूतिया बंदा है। क्योंकि और कोई तेरी बात सुनता ही नहीं, घर वाला सुनती नहीं, तो निकाल तो रखा है देखो घर से बाहर। क्या बोल रहा है? मैं सुनूंगा तेरे लिए। कम किया मैं भाई फुल टॉक्सिक चल रहा है। वही तो भाई, तेरे को पढ़ने भी नहीं आता, सुनने भी तो नहीं आता भाई। गवार लोग भूल गया, मैं भूल गया था। क्या बात कर रहा है भाई? भाई लगे ना वही तो गवार है, सॉरी पढ़ाई नहीं किया, भूल सॉरी। एबी को गवार बोल रहा है। Sorry. Ears still ringing. बोला ना खेलने नहीं आ रहा, खेलने नहीं आ रहा तो खेलने क्यों आ रहा है? सुन ना, अगर वो वॉल बनाया ना तो तू उस पे 2 शॉक डॉट डालना, मैं मॉली डाल दूंगा, मर जाएगा। हाँ वही कर। चल रहा है ना, मैं तेरे को बचाऊंगा। भाई राना ने लिया नहीं। Stealing sight. डालो मॉली। Cutting their vision. Launching smoke. यूसी किया ये फिर से। अब ऐसे भी कर लेंगे सिल्वर रैंक वाले, पता नहीं था। हाँ अरे भाई टीममेट को मारने देखते हैं। पता ही नहीं था भाई सिल्वर रैंक वाले टीममेट को मारने देते हैं। तो सिल्वर कैसे पहुंचा भाई? हैक लगा के पहुंचा क्या? अच्छा कोई बूस्ट किया लग रहा है मुझे। ए दूसरा मैच लगा वासिम भाई, मजा नहीं आ रहा है मुझे, अब कुछ बोल भी नहीं रहा है भाई। खुद गाली रहना वेंडल बढ़िया ले ले मिड में फिनिक्स है। हाँ रहना गेमिंग भाई बताओ ना कौन सा Out of charges. पूछ रहा था वो मुझे। 30 seconds left. रहना चूतिया है। Last player standing. भाई 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 ऐसे ही मिलते अपने को। वो नहीं भाई, रायना थ्रो कर रहा समझ रहे ना आप? घंटा थ्रो कर रहा, उसको खेलने नहीं आ रहा है। भाई सिल्वर रैंक होके भी बॉटम पे है भाई दोनों भी। Let's ruin their day. What do you need?
Need equipment. देखते देता क्या ड्रॉप। अरे बहुत सही यार, रायना ने दिया। What do you need? Thanks. For you, hermanita. Down here. इसको क्या हुआ? ये गन क्यों फेंक दिया? वो खेलना ही नहीं चाहता। Scanning ahead. ये क्या था? इसको रिवील कर रहा हूँ। Enemy spotted me. Grenade! Go get him. Pulling them Smoke in. down. Off your feet! Smoke. पुश हो रहा। Enemy spotted A. प्लांट कर दे। Plant the spike. Launching smoke. प्लांट कर दे, इधर प्लांट कर दे, इधर प्लांट कर दे। Out of charges. इधर कर दे ना, मजा लेता था उसके में। पीछे से आ रहा है। Shock dart. बैकस्टैब है बाय द वे। मालूम नहीं तो। बता रहा ना तभी तो मैं। तू तो नहीं खेल रहा था ना? हाँ। पता क्यों रहा है फिर ये? नहीं खेल रहा फिर। A bow and arrow is old-fashioned, but sometimes old मैं ways ऐसा are बोलो best. ना कि सिल्वर रैंक से ऊपर है हम तीनों तो। मैं तो लेवल 12 का प्लेयर हूँ बोलो। भाई मैं तो अभी चालू किया हो भाई। पता नहीं सिल्वर रैंक ऐसा होता तो मेरे को नहीं चाहिए, इसके ऊपर वाला चाहिए, आयरन। हाँ तो भाई गेम खेलना खेल सकते हैं, ये देखो मैंने। इसके ऊपर वाला रैंक चाहिए मुझे, आयरन। भाई छोड़ना भाई, सिल्वर रैंक ऐसे नहीं होते, ये झूठ। Come into the unknown. हाँ भाई तो कैसे ही बताओ, उसको कोई पहुंचा ही नहीं ना। कितना रो रहा है भाई? रो नहीं रहा भाई, इसे कहते हैं तो जलन हो रही है, तो पता नहीं ना। कहते हैं रंडी रो। मैं मिड क्या देख रहा? मेरे को मेरे सोच मिड से कवर दे। देख रहा मिड। अपना बंदा देख रहा था, देखना 2 को मारा मेरे मरने के बाद। देखना भाई फुल ट्रोल कर रहा है ये भाई। देख मैं ब्लॉक कर दिया तेरे को। किसको रिवाइव किया? ऐसे खेलते हैं सिल्वर वाले, पता नहीं है क्या भाई आपको? 2 किल वाले को उसने रिवाइव किया है, देखना 8 किल वाले को। मत करो बेचारा, रेस बेचारा अकेला मेहनत कर रहा है। बोला तेरे को नहीं करना था। देखना बेचारा रेस अकेला लौट रहा है। Like silver player. 30 seconds left. 1 enemy remaining. 4. वो देखो ना, वो स्पॉन पे जाके बैठ गया। रेस तू अकेला खेल रहा भाई। छोड़ो ना भाई, सिल्वर वाले ऐसे ही खेलते हैं। रेस भाई बुरा मत मान ले भाई इसके बारे में भाई। वो सिल्वर 3 है, तेरा क्या रैंक है बे? रेस क्या रैंक है? तू आयरन है, समझा? 10 seconds left. Grenade! Last player standing. रेस का हाँ रेस, तू आयरन है बे, फिर भी अच्छा खेल रहा है। Watch them run when lit by my sonar. That's when we strike. What do you need? रेस भाई तू सिल्वर वाले से अच्छा खेल रहा है। Need a drop. What do you need? Run. Grenade! Reloading.
अरे जब मार लिया था फिर भी मरा। अबे भाई क्या बंदे हैं। Last player standing. भाई मजा ये खेलना कौन मना किया। सामने वाली टीम भी मजे ले रही है उसके बाद। सिल्वर सर Reloading. Scanning ahead. Reloading. Reloading. Rotating. There. Going B. Going B. मजे लो भाई, फुल मजे चालू है। अब ये मरने वाला, इसको पाल्टी मारूंगा। मैं भी अल्ट मार दूंगा उस पे सीधा। Smoke's down. चल यहाँ से। मिड आ रहा है। Launching smoke. अबे भाई मिड आ रहा है। Spike down B. You are divided. इधर ही है कॉर्नर पे, बोला तेरे को इधर ही 30 seconds left. ग्रेनेड शूट देख रहे हो? मेरे को भी वैसी पड़ी, भाग भाग के खेल रहा है। Last player standing. Colorful kill. आप खेल रहे हो, तुम्हें खेलना नहीं आ रहा भाई। क्या क्या उखाड़ लिया खेल के। 10 seconds left. खेलो ना तुम चुपचाप भाई, क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हें? अब तो मजे करना अनरेटेड है वे, क्यों टेंशन ले रहा तू इतना? कॉम्पी थोड़ी ना। अरे वाह ठीक है भाई, एज यू विश भाई। One enemy remaining. तो थोड़ी कर लेते हैं, काम करते हैं ना भाई। एक काम करते हैं, नाइस लिखो। I'll teach them to respect their elders. इतना क्यों रो रहा है? किधर भाग गया? कहाँ भाग गया? भाई देखो देखो चार देखो, बाप रे बाप। भाई तुम लोग क्या लिखे देखो। देख रहा हूँ मैं। तुम लोग तो कब से मजे ले रहे इसके। Goner. मिड आया एक। यहाँ क्यों अल्ट की चाहिए? Enemy spotted A. One down. Enemy spotted A. One enemy remaining. Joke's over. You're dead. Knife. Molly. अरे भाई मजे चल गया बेचारा। Much as this world hurt me, it's mine, and I need a drop. Thank you. फेनिक्स आग से कैसे मर सकता है? ब्रोकन गेम उसमें ही खड़ा होकर मेरे से लड़ रहा है भाई। Cutting their vision.
साले लोग मिड नहीं देखते, मिड से आके मारता मेरे को कभी भी। Cutting their vision. Scanning ahead. अरे भाई नीचे भी आ गया, नीचे भी देखो। ड्रोन छोड़ना उसे, फेक ड्रोन। पीछे तेरे पीछे। भाई क्या हो गया, क्या हो गया? उसने पर 117 मारा, 117 मारा, हील कर रहा होगा वो अपने आप को। फिनिक्स है। ड्रोन छोड़ना फेक। नहीं देख लिया तेरे को सुबह ना, इधर पे तू शॉक डट डालेगा। फिनिक्स 117 मारा, 50 हील कर चुका होगा। Revealing it. चल भाई फाइनली खत्म हुआ। चलो एटलीस्ट सिल्वर प्लेयर के ऊपर तो है भाई। चलो अच्छा भाई है। हाँ, वो खेला पता नहीं था सिल्वर प्लेयर ऐसे आगू। अरे मेरे बचने के चांसेस नहीं थे वसीम भाई। मालूम है मेरे को भाई। इसके मजे बहुत है बेचारा। चलो लास्ट है भाई। क्यों लास्ट? बस अभी रात को भी करना है ना स्ट्रीम। तो करो भाई, रात के 10:30 को करोगे ना। मैं इन गेम क्यों दिखा रहा हूँ? पता नहीं। अभी हुआ नया फीचर है भाई। भाई एक गेम में डायमंड प्लैट जाने वाले आपको सिल्वर प्लेयर सिखा रहा है। वो सिल्वर है नहीं है वो भी नहीं पता भाई। पर इतना बकबक कर रहा है, वो कर ये कर, बाप रे बाप। Match found. आप चैट देख रहे हो वसीम भाई? चैम्बर का टीपी बेकार हो गया ना। क्या हुआ टर्बो भाई? मैं 1 मिनट अभी आया। और आना फिर से साथ में। They think I'm an old dog? I'll show them just how many tricks I know. ओ भाई सामने लेवल 2 प्लेयर है। आवाज आ रहा है वसीम भाई? आ रहा है। कहाँ गए हो आप?
the spike. Got the spike. Enemy spotted B. Shadows Harm their traveling. Reloading. Enemies B. Spike down B. Reloading. Backstep. अरे. Smoke's down. That'll work. Brim, nice to meet you. Planted. याद है भाई पिछले गेम में वो था सेज. हेलो ब्रिम. कुछ मत बोलो वसीम भाई. जवाब बेटर था याद है. हेलो. Gun here. One enemy remaining. एंटी चेंबर. ये पढ़ो किससे कैसे शेरिफ डाले शेरिफ. You see? They're flawed. Ordinary. वसीम भाई सिल्वर वाला फिर से आया मेरे लॉबी में. Reloading. Cover going out. Shadows traveling. Enemy spotted me. 81 डैमेज का आया. मरे नहीं. वसीम भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है. Smoke's down. हेलो. खा रहा हूँ कुछ. One enemy remaining. आप टीम माइक में मत बात करो ठीक है. भूल के भी. वो चूतिया वापस आया. उसको एंड में लेंगे उसका. अब खेलने देंगे उसको. देखेंगे कैसा खेलेगा. Time to take these arms for a spin. सब चले गए. चलो फिर इसको ही लास्ट गेम कर देंगे फिर. GTA पे वॉचिंग आएगी बट GTA नहीं चल रहा आपका. Shadows traveling. Fully smoked. दो मिड है. बी लिंक फेंके दो. Enemy spotted B. क्या कवर कर रहा भाई. Spike down B. Joke's over. You're dead. One enemy remaining. अरे फीनिक्स को नहीं मारा. I am sorry, we could not work out our differences. They can run or get run over. Their choice. अब आपका नाम ऐड नहीं किया ना. रुगन हेलो भाई. पिछले गेम में दादी बोला था भाई. जवाब मत दो दोस्तों. फिर बाद में लिखेंगे कि हम बड़बों को आंसर नहीं करते हैं. Light him up. इसके ऊपर स्मोक करो. Enemy spotted mid.
Stealing sight. Concussing! Enemy spotted. Launching smoke! क्या था ये? भाई मेरे को कुछ भी पड़ गया। One enemy remaining. My ult's ready. Reyna, I must say how nice it is to work with you. Need a It is drop. so hard to find partners with you. Drop दो, experience. Drop दो। Thank you. भाई। जैनब दो बेटा। बाइक का आपके ऊपर है वो। ब्रिज के ऊपर डाल दो, यहीं चला दो। Cutting their vision. Enemy spotted B. Reloading. Trevor! Fully smoked. There. Plop the spike. वाह भाई। Spike down B. अरे बोसरी का कैसे मारता है भाई? दे बेटा। Got the spike. बैक स्टेप देख लो मेरे Spike भाई। down B. Last player standing. दो ना। दो। If you are not doing well, keep trying. We must keep up appearances. क्या कर रहे हो? They are so dead. Need a drop. चलो भाई खा के हो गया। वो तीखा था। I need this. Get out of my way! तू क्या पैसे रख के नहीं दे रहा है लोड़े का भाई? Enemies mid. You were a mistake. My ultimate. Fire in the hole! The carrier is dead. Spike down mid. and out. I have the spike. मेरा नेट की माँ की आंख। हट। क्या चूतिया नेट है भाई? Last player down. standing. Spike down Yeah, yeah. mid. One enemy remaining. My Clutch. ult's ready. Let's go. That's why they put me in charge. Thank you. Leave some fight for the rest of us, old man. Reloading. No prisoners. अरे मेरा पैकेट लॉस 500 काउंट के ऊपर चलेगा। Got the spike. Spike drop. Got the spike. Nowhere to run. Blasting. स्पाइक दे दो। ओमेन को स्पाइक दे दो, वो टीपी कर लेगा। Enemy spotted. Spike drop. Spike down. Attacker spawn. Got the spike. Right here. पीछे से भी आ रहा है। पीछे जा सकते हो यार अपना। हील कर रहा है वो। Launching smoke.
Smoke's down. 30 seconds left. Still in sight. Launching smoke. आया देखो पीछे से भी आया Enemy spotted A. Joke's over. You're dead. 10 seconds left. Last player standing. Spike planted. Open up the sky. One enemy remaining. असीम भाई फीनिक्स डैमेज निकाला है Molly. Stim beacon here. Please do not mistake my आप smile. I वसीम take भाई this song very ब्रो seriously. मैं पीछे मार रहा था आगे से चले गए भाई प्लान करने कितना था मेरा गोली खत्म हो गया मैं देख रहा हूँ कहाँ है अरे मैं प्लान करने टाइम कितना कम बचा था तो मारने में तो हार जाता एक था वो मार दे सकते थे एक ही था वो डैमेज नहीं सामने रेस को मार के प्लान किया मैंने अरे मेरा नेट क्यों आ रहा है अब Shadows travel. There. Enemy spotted me. See ya. Smoke's down. मल्टीपल अरे कुछ बोला बड़े लेट्स बोल तो भाई हेलो अरे मल्टीपल पीछे है ये बोल रहा हूँ मैं पीछे 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 हाँ Cutting their vision. बॉक्स वाह क्या ही मारा है मस्त मारा है They're not getting the message. Leave it to me. I'll rough them up. पैसे आपके Need a drop. लेना बिंदास Thank you. ये आपको बोल रहा है तब से बोलना बोलना कर रहा है चूतिया बोले इज्जत नहीं उसकी बोले नहीं लास्ट में है भाई इज्जत नहीं उसकी हाँ लास्ट भाई हम बड़ों को जवाब नहीं देते हैं Cutting their Flash vision. out. Enemy वाह B. Blasting. Reload. मार दिया I don't think so. Launching smoke. Amateur. Smoke's down. One enemy remaining. In the eyes. एक और ऊपर ही है फ्लैंक किया Smoke's down. इसको तो नाइफ करूँगा Still in sight. Right here. Out of charges. Reloading. Molly. भाई ये हैकर है क्या इसे कैसे मार रहा है Stim beacon down. Just swapping in your fusion cells. Okay, my arms are good. We can go.
क्या मस्त मारा है भाई फीनिक्स तो साला। उधर चैम्बर को सीधा हेड पे हेड मार दिया डायरेक्ट। We survived. Spectra. Cover going out. Drop Still the in spike. sight. Reloading. Here we go. Face your fear! मैं मारने के बाद भी लगा। Got the spike. वाह मेरे गोल ही कब खत्म हो गए मुझे भी पता नहीं। One enemy remaining. Fully smoked. Let us see what they have planned for us this time. Akash tutorial. ड्रॉप करो भाई। Right there. Right there. Shadows traveling. Reloading. Fire in the hole! Launching smoke. अरे बाय बाय बाय। Enemy mid. One enemy remaining. Three in the body bags. भाई गंदा मारा। Last round in the half. Spend everything. Need equipment. Thanks. Safety's off. Cover going out. Reloading. Shadows traveling. Right here. Reloading. Right Get here. out of my way! Enemy B. Blasting. Launching smoke. Reloading. Joke's over. You're dead. Let's go. Let's go. One enemy remaining. In sight. भाई मैं मरा सामने मेरे खड़े लोग वहाँ। But alas, you're dead. अरे मैं तो उसको चाकू करने जा रहा था। Switching sides. Okay, which gun to pick this time? Reloading. लॉल हो गया। Defenders सिल्वर वाला win. बोलो ना। ए ब्रेव ऊपर देख कौन है तेरे, देख ब्रेव तेरे ऊपर देख कौन है। अरे सिल्वर वाले बोतरी के बाहर ना। तेरे ऊपर कौन है? अबे साला नीचे ही था वो। अच्छा चैम्बर की बात कर रहा था, लाल खुद की बात कर। नहीं वो तेरा किल है ना वो। कौन चैम्बर के तरह के लिए? वो थोड़ी ना। चैम्बर नहीं ब्रीच खेल रहा था वो। ब्रीज नहीं ओमेन था वो। नहीं ब्रीच था। आकाश आकाश। नहीं नहीं ब्रीच था वो। अबे आकाश नहीं, ब्रीज नहीं था वो। ब्रीच था भाई।
अरे नहीं, ब्रीच नहीं था। आकाश आकाश तो रहना था भाई, तेज नहीं था। सेज का ये नाम ही नहीं था नेक्स्ट गेम में। तेज ब्रीज है, देखो ना। अरे दोनों मैच देखो, भैंस क्या बात कर रहे हो, देखो जाके। ओमन आकाश, वो रहना आकाश था, और वो अनरेटेड में इतना खुश हो रहा हूँ कसम से यार, क्या बोलूं। हाँ, 100% वो आयरन का बंदा जो बूस्ट हुआ है। हाँ पक्का आयरन का बंदा जो बूस्ट हुआ होगा। क्या कर रहे हो, जा रहे हो, खेल रहे हो? नहीं भाई जा रहा हूँ, बस हो गया। चलो भाई बाकी रात में देखेंगे। आज रात को ईटो का वेपन वगैरह सब अपग्रेड करेंगे। चलो भाई लोग, थैंक यू फॉर वाचिंग। जो भी 2 लोग देख रहे हो भाई, थैंक यू इतनी देर तक का वैलोरेंट झेलने के लिए। नहीं, मेरा वाचिंग मेरे को नहीं दिखाता है। अच्छा चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू टुनाइट, बाय।